The Assalamu alaikum, Jide, and good morning, everyone. The galaxy of intellectuals, esteemed directors, invited guest teachers, and our lovely students. I'm Mohammed Hussain, a student at Government Boys Higher Secondary School Leh. I'm here honored to be a anchor today. Hello, 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 hello. A healthy mind resides in a healthy body. After all, the nourishment to mind is after the nourishment to mind. It is time to nourish our body. We will be back for lunch for 40 minutes. Please do not leave us as we have more insightful session lined up after lunch. After the serious discussion session, let us take a breath and enjoy the dance number by the students of third standard from Islamia Public School. To conduct to conclude today's fruitful sea learning conclave Ladakh 2023, we would like to invite Sri Chetan Dorje, Principal Diet Lead. बोलूं हाँ hello hello mic check. uh, it's true that it's true that children are great imitators, so give them something great to imitate. A heartily welcome to students of primary school. Compassion and love are not luxurious, as famously said by His Holiness the Dalai Lama. It is a source of both inner and external peace. They are fundamental to continued survival of our species. Inspired by this message, today we all gather here to the social, emotional, and ethical Sea Learning Ladakh Conclave 2023. The curriculum of Sea Learning was globally launched in 2019 in the presence of His Holiness and more than 1,000 dignitaries around the world. يا جلي جلي لو تسمع hello 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 mic check hello 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 Ding, जैसा last में हाँ last में hello 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 my phone is fast. Burada olmak zor da tabii. Hiç indicazione. Чё-то нам баррикад. To share the implementation experience initiative program.
हेलो हेलो हेलो। अभी ठीक है। Hello, 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 hello. Assalamu alaikum, Julian, and good morning, everyone. Everyone, galaxy of intellectuals, esteemed directors, invited guests, teachers, and our lovely students. I'm going to say Government Boys High Secondary School Day. I'm here honored to be your just because good morning and good morning and Julia one. Chiar domnul pic de la litera, ajunge, nu poate fi niciun știți, nu? Deci atunci nu putea și corte tanste, și corte tanste. Am să ce fac, este cum să te mă zic. Să mă la chiriță la competition. Sau milele da. Niciun loc. N-a zis până nu dați de concertă și sau mă welcome. Good morning and Julia. I'm just Portiți. Ca făceau să avem gata. Tamam, şey am mesaj o zaman ben bazı bir zice. Hello, hello, hello. Hala figure çon kar bakıyor bu. Yani korkma. Şey tutuş bekliyor. Today, everyone, galaxy friends, intellectuals, esteemed directors, invited guests, teachers, and lovely students. I'm Mohammed Hussein,
student at Government Boys High School in Conclave. I'm here honored to be your anchor today. Ini muna naman passenger sa akin. Namaste nga pangkalan. Good night. Hindi mo agad kailangan ako ng stress ka. The journey of sea learning in Pakistan has been much clearer. It's showed that the food adventure is a little and this complete is dedicated to celebrate our achievement, celebrate our future and to achieve our messages. So give them something great to meditate. I heard you everyone from the students of primary school was well with me for all the reference. Thank you. This so truly encapsulate our passion for adventure of overcoming the hurdles and challenges that we face in our life. We should truly overcome. The concept of system teams interdependence. And that's very integral part of C learning curve. English curriculum part and what great joy opportunities of learning for us. Therefore, to share this implementation experience and with initiatives to main one of the boy in the meantime, working in English often so that the things actually based on the especially because of the anyway, I will be what I do about other justice. And as I the sergeant was next way, still from the company that has to be I'm not basically to be honest with you. I'm not like and cannot be have the design to and everything easy and greatest. No, with me, I'm on the design. Yeah.
नहीं हुआ है। वहां से तो लैपटॉप में नहीं, जहाँ से तो हो चुका है। यहाँ से हो रहा है ना, वहां से नहीं। Beautiful eyes. So let's you be my ideas is what this talent is doing the story, the show. That is in the decision of the and sure, we're in for performance. Hello, hello. So there is something really behind. It really development students of primary school scholars football and doesn't Tangier is someone who's extremely encapsulate our passion and intention of our for all the hurdles and challenges that it has. Vision between our common the concept of system teaching and the dependence to go part of seeking successful intervention of creating by authorities and actual creating joint opportunity. Yeah, as therefore to share the documentation of basic and minor things from the forward of people flying
Hey yo guys, this is your artist Holgard and welcome to an epic tutorial.
हेलो 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 ठीक हेलो हेलो तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा गार्डन बना हुआ है। ये पूरा गूगल का इवेंट है जो ये होटल में ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे आप फ्लावर्स देख सकते हैं। मुंबई में एक एक फ्लावर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे प्रॉपर एक गार्डन बना हुआ है। चलाइए मैडम। हाँ, ऑडियो बाद में डाल। हाँ जी, पहले आप साउंड अपने लैपटॉप में चेक करिए आ रही है कि नहीं। आप इसके बाद में आ रही है ना?
It's Rena, and I'm from Arizona, from the United States, and I work with the Trauma Resource Institute, and that's what brings me for the Sea Learning program here. Hello, my name is Viola Fischer. I come from Hamburg, from the Tibetan Center, and I'm working in a primary school. I'm here for Sea Learning because I really appreciate this program. I hope that I'm able to implement it in our primary school and to make the pupils happy. My name is Tim Unger. I work for the University of Aachen and I have a chair. I'm professor for science in education. And, well, sea learning is a great opportunity for pedagogics because I think it's a good time now for a change. I'm Tanvir Alam. I'm from Dhaka, Bangladesh. I read in Cardiff International School, Dhaka, and I'm in ninth standard. I came here to learn about peace, and I want to learn at which point every human being is equal. We came here from Ukraine, from Eastern Europe. We need to raise awareness about the need of introduction of social, emotional, and ethical learning programs into our education system. I represent an organization in Mexico called Atentamente, and we've been working with the Ministry of Education in Mexico with SEL. So for us, the CE curriculum is an amazing progress that we want to also integrate and enhance the ethical piece in what we've already been doing. Hi, I'm Yasmin. I'm from Jordan. I'm really looking forward for tomorrow's Sea Learning program. Hello, I'm Megan Noonan from Aspen, Colorado, United States. I'm a math teacher and I teach the C curriculum at our school. I'm also the coordinator for our building. Oh, hi. Yes. Me too. I'm Swan. I'm Injit. We are from South Korea, and I'm translator of Sea Learning. Nice to meet you. I'm Denson Bema from Department of Education of Central Tibetan Administration, and I'm very happy to attend this international launch of Sea Learning here in Delhi. Thank you so much. I'm from Foundation for Developing Compassion and Wisdom, which is FDCW, and is an affiliated with WMT, which is the Federation for the Preservation of Mahayana Tradition. Hi, I'm Dee, and I'm from two organizations. One is a school that I'm teaching at, where I teach drama, and the other one is FKMT India. So I'm here because I'm really curious to learn about how to bring secular, ethical, and emotional learning in a classroom. Hi, I'm Vedant. I'm from Labia Foundation. We are working currently with the Delhi government on the happiness curriculum. I think it's very logical about the fact that how the Dalai Lama has spoken always about secular ethics in the world. And what brings me here is the fact I think just to learn and the kind of work and research that the Embry team has been able to do is tremendous. And just wanting to learn here and just truly in gratitude of everyone around and the compassion is flowing. Thank you so much. My name is Sona Wangdu. I represent Ladakh Public School Leh. So I think such kind of a program would go a long way in making the kind of world that we all want to see. That's a great transformation. Great luck. Hi, I'm Shruti. I'm from Silva Consulting, and we are working with Cavalier Education Foundation in redesigning and transforming the Gandhi Fellowship solution. So what brings us here is we feel that the Sea Learning curriculum can add a lot of value to the curriculum that we are designing for Gandhi Fellowship to build social leaders which can transform the society at scale with values which are embedded and socially and ethically vibrant. And what brings us here is that we work very closely with government school leaders and government school teachers in Delhi and in Uttarakhand. And right now we're trying to look at how emotional learning, social emotional learning can be part of the student vision, the outcomes that government schools work on. Hello, everybody. I'm Lamarinci from Brazil, representing Colégio Ser, Sorocaba, São Paulo. We are here to honor the launch of Learning and also to learn from Sylvanas' vision for this learning for the 21st century. Very happy to be here. My name is Bhavan Sharma. My name is Ankit Goswami. We are from Salman West Secondary School. Hello, my name is Regina Proença. I come from Brazil, from the Cultural Collective Fora da Caixa, and we work with children and teenagers with social, emotional, and ethical education and education for peace, non-violence. Hi, my name is Neha Butch, and I lead an organization called Prava.
We are a youth development and an adults and development organization, and our vision is to build inside out youth leadership for social change. Hi, I'm Addie Langstaff, and I'm really honored to be here as a guest of Emory University. I've been working with them on the online platform. Really excited to see it all come together. So we are very proud and happy to be here and represent Ukrainian delegation on CE launch event. Hello from Ukraine. From this, I learned that how to be patient and how to make up mistakes with a
not me. It's not me. Not from here. It's from there. It's Lobsang's laptop. My colleague Reshma Piramal and I head C Learning India. And so far, we've worked with about 6,400 teachers directly, training them in C Learning because the average Indian teacher is not trained in some of the concepts that C Learning assumes for a teacher to know. We also have about 120 level 1 certified facilitators who can train teachers and educators further. And we also are part of the CBCT program that is being offered in India through 11 certified instructors. C Learning India works with both private schools and not for profit organizations. With private schools, we work directly with administration and educators. And with the not for profit organizations, we go through them to train educators and their staff to work in government schools and public schools across the country. The school, like the DNMPS English Medium School, runs on a public-private partnership between the Kansha Foundation and the MCGM, that's the Municipal Corporation of Greater Mumbai. From this year onwards, we have a practice at school where we take the last 2-3 minutes at the end of the class to engage in learning practices. So it's a 40-minute class, and everybody now knows that when you have 2 or 3 minutes left, you just wind up, you take a moment for yourself, and now we're at a space where students actually lead those practices in class. So we started off with teachers doing the practice with everybody else, but now kids are taking ownership of that. That time, that 2 or 3 minutes, is a good transition period both for students and teachers because students need time to move from one subject to another. So do teachers, right? So they're moving from one class to another, and you want them to move out in a really in a calmer and a grounded headspace, which that pause allows them to do. So whenever I'm stressed about exams, so I always like use my C-learning thing, the activities like starfish activity and counting till 10, feeling some object and breathe out. So whenever I use C-learning activities, so I really get relief and I feel like, okay, now I'm cool down and I'm calm. Because of that, I can give my exams very nicely and very calmly. And because of that, I really score also nice. हाँ दीदी, सी लर्निंग हम लोग ने सुना भी है और करते भी है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सी लर्निंग से हमें हेल्प हो गई, क्योंकि हालात बहुत बुरे थे हमारे साथ। लेकिन हमारे स्कूल ने हम लोग को मतलब टेंशन फ्री रहने के लिए सी लर्निंग करवाते थे, कि थोड़ा मतलब जूम मीटिंग करते थे, उसमें बच्चों लोग के साथ भी और हम लोग के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी सी लर्निंग एक्टिविटी करवाते थे। बोलते 5 मिनट आप अपने लिए टाइम निकाल के सी लर्निंग एक्टिविटी करो, और उन जूम क्लास पे डेली होती थी। अभी बच्चों लोग की भी तो डेली होती है स्कूल में भी, जैसे एक क्लास हुआ, क्लास के बाद सी लर्निंग रेगुलर करवाते हैं, जिससे बच्चे लोग का माइंड मतलब पढ़ाई में लगा रहता है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं रहती है उनके दिमाग में फिर। इसलिए कौन सा भी मैथ का क्लास हुआ उसके बाद सी लर्निंग करवाते हैं, सर्कल टाइम रहता है तभी भी सी लर्निंग करवाते हैं, पी के लिए जाएंगे तो बच्चे को थक जाते हैं, तो पी से आने के बाद भी उनके साथ सी लर्निंग एक्टिविटी करवाते हैं। Unfortunately, our society is still gendered and patriarchal. So a lot of responsibilities fall on the shoulders of mostly female educators. So they are expected to take care of home. They're expected to take care of children in the classroom. Given the population, the number of kids, the student teacher ratio is quite high. We also recognize that especially in the government school setup,
A teacher's role is not restricted to only teaching in the classroom. In this school, we are working on the C-learning from the last 5 years with different stakeholders. Like we work with teachers, how they can manage their struggle life, because in the department they have lots of work, which includes their academic works, some data related works. So they have lots of issues. They can't manage their personal and professional life. I am in a good space. People are listening to me. They are mindful. They give respect to me, and we are a team. We want to try to build a place where everyone is feeling safe and feel like they are a team. At Sea Learning India, the well being of the educator is at the center for us, because while Sea Learning as a program is for children, without the embodiment of the educator, Sea Learning is not going to happen with authenticity and fidelity in classrooms. So, cognitively based compassion training has been a blessing for us at Sea Learning India, because the work that we're trying to do of teacher well-being, because through the program we're able to support the teacher in their own flourishing, and through that they're able to show up better in classrooms and be there for their students and help them make that journey. I personally feel that C learning must be replicated and taken to various schools in India. When you talk about research, it's basically us understanding how that curriculum works in India in BMC schools, right? If they know this works, what better than research to advocate for it more? There will always be people who doubt a particular model or a particular method. We can show them that it works.
the class to engage in sea learning practices. So it's a 40-minute class. And everybody now knows that, when you have 2 or 3 minutes left, you just wind up, you take a moment for yourself. And now we're at a space where students actually lead those practices in class. So we started off with teachers doing the practice with everybody else, but now kids are taking ownership of that time. That 2 or 3 minutes is a good transition period, both for students and teachers, because students need time to move from one subject to another. So do teachers, right? So they're moving from one class to another, and you want them to go out in a really in a calmer and a grounded headspace, which that pause allows them to do. So whenever I'm stressed about exams, so I always like use my C-learning thing, the activities like starfish activity and counting till 10, feeling some object and breathe out. So whenever I use C-learning activities, so I really get relief and I feel like, okay, now I'm cooled down and I'm calm. Because of that, I can give my exams very nicely and very calmly. And because of that, I really score also nice. हाँ दीदी, सी लर्निंग हम लोग ने सुना भी है और करते भी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सी लर्निंग से हमें हेल्प हो गई, क्योंकि हालात बहुत बुरे थे हमारे साथ। लेकिन हमारे स्कूल ने हम लोग को मतलब टेंशन फ्री रहने के लिए सी लर्निंग करवाते थे, कि थोड़ा मतलब जूम मीटिंग करते थे, उसमें बच्चों लोग के साथ भी और हम लोग के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी सी लर्निंग एक्टिविटी करवाते थे। बोलते 5 मिनट आप अपने लिए टाइम निकाल के सी लर्निंग एक्टिविटी करो, और उन जूम क्लास पे डेली होती थी। अभी बच्चों लोग की भी तो डेली होती है स्कूल में भी। जैसे एक क्लास हुआ, क्लास के बाद सी लर्निंग रेगुलर करवाते हैं, जिससे बच्चे लोग का माइंड मतलब पढ़ाई में लगा रहता है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं रहती है उनके दिमाग में फिर। इसलिए कौन सा भी मैथ का क्लास हुआ उसके बाद सी लर्निंग करवाते हैं, सर्कल टाइम रहता है तभी भी सी लर्निंग करवाते हैं। पी के लिए जाएंगे तो बच्चे बहुत थक जाते हैं, तो पी से आने के बाद भी उनके साथ सी लर्निंग एक्टिविटी करवाते हैं। Unfortunately, um, our society is still gendered and patriarchal. So a lot of responsibilities fall on the shoulders of mostly female educators. So they are expected to take care of home. They're expected to take care of children in the classroom. Given the population, the number of kids, the student teacher ratio is quite high. We also recognize that especially in the government school setup, a teacher's role is not restricted to only teaching in the classroom. In this school, we are working on the C-learning from the last 5 years with different stakeholders. Like we work with teachers, how they can manage their struggle life, because in the department they have lots of work, which includes their academic works, some data related works. So they have lots of issues. They can't manage their personal and professional life. I am in a good space. People are listening to me. They are mindful. They give respect to me, and we are a team. We want to try to build a place where everyone is feeling safe and feel like they are a team. At Sea Learning India, the well-being of the educator is at the center for us, because while Sea Learning as a program is for children, without the embodiment of the educator, sea learning is not going to happen with authenticity and fidelity in classrooms. So, cognitively based compassion training has been a blessing for us at Sea Learning India, because the work that we're trying to do of teacher well being, because through the program, we're able to support the teacher in their own flourishing. And through that, they're able to show up better in classrooms and be there for their students and help them make that journey. I personally feel that C learning must be replicated and taken to various schools in India. When you talk about research, it's basically us understanding how that curriculum works in India in BMC schools, right? If they know this works, what better than research to advocate for it more? There will always be people who doubt a particular model or a particular method. We can show them that it works.
should request dignitaries to accompany him. I would like to request Chief Justice Honorable CCLHTCB and Tashi Johnson to please come forward for on PIP's application. Hi, please hold on. For lightning up the lamp. For lightning the lamp. Lamp paper customer. And also request other dignitaries to accompany and also church documents. Hello, hello, hello. Mic test. Hello, hello. I would like to request Chief Guest Honorable CC LHTC Lay Advocate Tashi Galson to please come forward for lighting up the lamp and also other dignitaries to accompany him. Hello, hello. Hello, hello. My sister Indy can search to some. Hello, hello, hello. Compassion and love are not mere luxuries. As famously said by His Holiness the 14th Dalai Lama, it is a source of both inner and external peace. They are fundamental to the continued survival for our species. Inspired by this message, we are all gathered here today for the social, emotional, ethical Sea Learning Ladakh Conclave 2023. Jule, salam, and namaste, everyone. A very warm welcome to all the dignitaries and lovely audience present here today on this very special day. Hope you all are doing great and are excited for today's very special event. Today's chief guest, Honorable CEC-LHTC Lay Advocate Tashi Galson, Director School Education UT Ladakh, Shri Tsering Paldan, Deputy Secretary Rigzins Palgun, Reshma ji and Neha ji from Sea Learning India, special guest from Arunachal Pradesh, Chief Education Officer Kargil Shri Mustaq Ahmed,
Chief Education Officer Leh, Shri Sonam Dorje Namgyal, DPO of Leh and Kargil, Principal of Government and Private Schools, GO of Leh and Kargil, and headmasters. Hello again, I'm Diskidammo from Government High Secondary School, Saspol. Today I'm here as your anchor, and along with me, my fellow anchor. Assalamu alaikum, Jule, and good morning, everyone. The galaxy of intellectuals, esteemed directors, invited guests, teachers, and our lovely students. I'm Mohammad Hussein, a student at Government Boys Higher Secondary School, Leh. I'm honored to be your anchor today. This conclave is being organized by the Department of School Education, Administration of Union Territory of Ladakh, with the support of International Institute for Culture and Ethics. The curriculum of sea learning was globally launched in 2019 in the presence of His Holiness and more than 1,000 dignitaries from around the globe. Sea learning curriculum has been designed for students starting from kindergarten to 12th standard. And it's changing the lives of not just the students, but also educators and society as a whole. The journey of sea learning in Ladakh started in 2019, and in span of few years, it has shown tremendous growth and potential. And this conclave is dedicated to celebrate our achievement and also to plan a roadmap for future ahead. Success of any initiative requires dynamic and dedicated leadership. And Sri Thering Paldan, Director School Education UT Ladakh, is a prime example of that. We would like to invite Paldan sir to the dais to welcome the gathering and present a brief on the implementation of sea learning curriculum in Ladakh. Sir, please. Honorable Chief Executive Counselor, Advocate Tashi Galsanle, Rixins Falgun, Deputy Secretary, School Education Department, Ladakh, Chief Education Officer, Neha and Reshma from Sea Learning India, Rema, the Deputy Director, SCRT Arunachal, Mr. Kaldan, Director, Karmic and Adhyatmic Affairs, Government of Arunachal Pradesh, Dr. Gurmeet Durje, Director, CIHS Arunachal, Tashian Lobzang from International Institute of Culture and Ethics, Ladakh, principals, officers from School Education Department, dear students, good morning, July. Today we are organizing a very important event, the Sea Learning Conclave Ladakh, in collaborations with International Institute for Culture and Ethics. So we are gathered here to deliberate the current system of educations across the world in Ladakh. And we are here to discuss the way in which we are educating our children, our students in schools. So in the last 4 to 5 months of my journey in school education department, I had an opportunity to attend two important events. One, the G20 conference on education in Pune. So where the delegates from G20 countries and experts from the different part of the countries were attending and discussing our education system. And second, very recently in Delhi, the school education department was organizing the third anniversary of new education policy. So there, I have seen the various experts from different part of the country were discussing the current system of educations
and they were debating over the topic of quality educations. And in the third anniversary of new education policy, and one of the sessions I had attended, there I seen one of the expert was giving a very interesting examples of current education system. So he was saying in class, he was asking two questions, the same questions in two different ways. One, he was saying, what is the perimeters of a rectangle? So there's a simple formula is there. So he said 100% students given the correct answer. Then he asked the same questions in different way. So which of he has shown a three shapes and says which of these shapes have a perimeter? Then he said the students were really confused. And then he said only 33% said the shape 1 is correct. And other one says shape 2 and 3 is correct. Because one of the shape is not connecting to each other. It's close, it knows a closed shape. So what does it mean? So experts there in the new education policy was talking, we are producing machine, not human beings. We should produce human being. So we should change our education system. So many of the experts was viewed that we need to rethink our education system. And we had witnessed a tremendous developments in the world and India also. And in Ladakh also in the last couple of years, decades, we had seen a tremendous development. So we had seen a developments in terms of infrastructure, in terms of road, in terms of connectivity, and in terms of everything we had developed. But does this development bring happiness? If I ask all of you, if we see our own lives 20 or 30 years back, we don't have anything, I think, probably. We don't have mobiles in our hand. Today, we have everything, I think, which we don't have 20 or 30 years ago. So all this brings happiness in our life. So if I ask all of you, probably most of you will say, I'm not happy. Because the person who don't have anything is looking for a car, simple. If someone has a car, he'll look for a I-20. If someone has a I-20, he'll look for Creta. If someone has a Creta, then he'll look for Land Rovers. Isn't it? Then why we are not happy? A serious question we are asking. So, but the world is also passing through so many challenges. So we have witnessing lots of violence, and our students, particularly, facing a lots of problem nowadays. They are passing through depressions, drug abuse. Even Ladakh, it's a small place of populations of hardly 3 lakhs. Even in Ladakh, we are witnessing such a violence. Cases are increasing every day. So if our students, I feel, is in problem, if they are not happy, if they are in depression, if they are not in a way in which we are seeing, so then I think properly we need to relook the education system. There's something wrong in our education system properly, I think. So experts argue that C-learning is a correct solution to those issues and those problems. And C-learning will help the students to think critically. It will help them to understand. It will help them to tackle the problems in which they'll face in their. So it's will. So all of us will, in our day-to-day life, will face the difficulties and very challenging situations. And C-learning will help us to tackle those difficult circumstances and situations. And the world is now recognizing the importance of C-learning. I guess many countries in the world has already introduced
the C learning curriculum has made their C curriculum as a part of their education system. And even in India, when this new education policy came out, the C learning was there. And it has mentioned in the new education policy, education system must aim to develop good human beings capable of rational thoughts, connections, critical thinking, and problem solving, and possessing compassion and empathy. So, thereafter, even in India, if you see the many states has made the C learning as a part of their curriculum. Delhi has done it in the name of happiness curriculum, I guess. Rajasthan has done it. Arunachal is also doing it. And last year, Ladakh has also introduced the C learning curriculum in launched the C curriculum on 6 July 2022. And in the last 1 year, we had trained 500 numbers of teachers in Leh districts. And we had implemented in all the government schools of Leh district. And we are keen to take it forward to all the government schools of Ladakh also. Today, we also had a guest and officer from Kargil also. So we had this year projected 38 lakhs under the Samagra Shiksha, which has been approved by the Ministry of Education in the recent Samagra Shiksha plan that has been approved. So now we are planning to take it forward to all the government schools of Leh district, Ladakh, sorry. So I hope, as I think I'll not say much about the C learning. Probably I'm the first, maybe the one in this entire whole who knows list about the C learning, because I had joined the school education department very recently, and today we had a long sessions ahead. So I'm sure that all of you will learn much about the C learning, and it will help us to take it forward to all the government schools of Ladakh. Thank you, Jule. Thank you, Sir Paldan. You are undoubtedly a perfect example of the saying that says leadership is not a license to do less, leadership is a responsibility to do more. The concept of system thinking and interdependence is a very integral part of a C learning curriculum. Successful implementation of the curriculum in any part of the world is a matter of great joy and an opportunity of learning for us. To share the implementation experience and initiative from India and the world, we would like to invite Head of C Learning India, Ms. Reshma Piramal and Ms. Neha Bhatia. Thank you. Okay. Good morning, everyone. Jule, Tashile. Namaskar. Okay. So we both, as you know, represent C Learning India. We are the primary affiliates of the Emory University here in India, representing C Learning in India. And in a very traditional C Learning style, before we start talking about what we'd like to share with you, हम एक छोटा सा check in करेंगे आप सबके साथ. Are you guys ready? I like that. Okay, so I'm going to throw some statements at you, and if you connect and relate to that statement, just raise your hand. ठीक है? अगर आप उस statement के साथ relate करते हैं, just raise your hand. How many of you like drinking tea? Okay, you might want to just look around. आपके आसपास कितने लोग हैं who like drinking tea? Okay, thank you. You can put your hands down.
My next statement is how many of you like to dance? Okay. Right, quite a few people. My next statement. How many of you like it when someone is kind to you? When someone is kind to you, जब आपके साथ कोई अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, you like it. Yes? Oh my God, सबके हाथ ऊपर है. Thank you. How many of you feel sad or hurt when someone is rude to you? है ना? Interesting. What does this tell us about ourselves? ये क्या बताता है हमें अपने बारे में? थोड़ा जोर से बोले. Absolutely. We all wish to be loved and respected. So whether we like tea or whether we like coffee or whether we like reading books or whether we like dancing, what is interesting about all of us and what is common about all of us as human beings is that we all like it when someone is kind to us, when someone is loving to us, respectful to us. है ना? And this is something common जो हम सबको जोड़ता है, right? और इसको सीखने के लिए हम कितने साल लगाते हैं? In our school system or in our lives, how many years do you spend learning how to be kind, how to be compassionate? Sorry? Inborn quality. Inborn quality. Absolutely. Are there ways, standard ways in which you keep on brushing this every day? When we see someone else doing something good that we have never thought of. Oh, we can do this also. Right. Absolutely. You're so right. Because we learn by watching. हम देखते हैं और हम सीखते हैं. कोई हमें सिखाते नहीं है आके कि this is how you should. This is the formula for kindness. From now on, in exam paper, we will ask you this formula. You should know this formula. And, absolutely, we learn from our family, we learn from our society, we learn from our friends, we learn from the world at large, right? The world that we all operate in. What is interesting is that the education system in all these years hasn't really focused on bringing this into our everyday. We spend so many years of our life in schooling. The initial years of our life are spent in school. And this one important part, something that we all appreciate, is not part of our schooling system. So at Sea Learning India, this is what we're trying to do. I'm going to quickly play a small video for all of you to watch, and then we'll share what we'd like to share with you. When a child is born, we do everything we can to protect them, nurture them, love them. A child's heart and mind are fragile. As they grow, we want to teach them everything we know. We send them to school to fill their minds with wonderful knowledge, to give them the tools they need for life. At school, they get a taste of what things are like in the world outside. There is friendship, romance, disappointment, embarrassment, discrimination, and bullying. But are the tools we give them enough to prepare them for this world? We have an enormous responsibility and an amazing opportunity. If we truly want to prepare them for the world outside, we must also educate the heart. Because to navigate the world outside with compassion, acceptance, and tolerance, we need to teach them compassion, acceptance, and tolerance. This can begin in our schools and it can start today. It can happen at hockey practice, dance class, at day camps, and music lessons. And it's already happening around the world with astonishing results. If we want our children to grow into socially and emotionally capable young people, we must ask for a balanced education that puts importance on educating both the mind and the heart.
Okay, with that, that's exactly what we do, and that's the most fun part of our work. This is just a representation of all our level one facilitators and educators we've trained so far. And I'm very happy to see and share with you that five of them are in this room right now. So the ones that you see on the top in Ladakh, the number five of them, or at least four out of the five of them I've met since the morning are here in this room. What we've done is we have trained, so we work with educators across the country. We train both the government school educators and the private school educators. And so far, we've worked with about 8,000 educators. This number is a little outdated. We've worked with about 250 organizations in schools and partnerships. And we have about 103 facilitators who are already certified to train further. And there are about 60 of them who are currently in training. One of them I can see in the room right here. And they're going to graduate before the end of this year. So we're going to have about 150 level one facilitators who can train educators further. So far we've reached out to over 2 lakh children, but clearly compared to what we do in India and the numbers, this is just a very, very small fraction. We've already heard Sir Paladin talking about the new education policy. And just quoting from the new education policy 2020, I'd like to share. It says education must develop not only cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving, but it must also bring in higher order capacities, which they have laid out as social, ethical, and emotional capacities and dispositions. What this means is C learning, as it is verbatim, is the program that is well suited for implementing or operationalizing the new education policy in states or across different states. So, what we do is, this is another reason why we think we're very well suited and match very well with the NEP, is because the NEP, I mean, before the NEP, if you see, India had a 10+2 kind of a structure in education. What they've done is in the new education policy, they've restructured how interventions will be created grade level wise. And therefore, if you see, the C learning curriculum also is divided in grade level wise, which is, an early elementary, middle school, late elementary, and a high school curriculum. So that's how the NEP also talks to the curricular structure of the C learning curriculum. We also have many other examples of adult learning, of continual learning programs, of professional development. All of those are part of the C learning curriculum. And this has really been our approach in the last 4 years. What we've done is we've worked with a lot of organizations on the ground to understand the best ways of implementing C learning. So the first one, if you see, we've taken the hub approach. What is the hub approach? What we're doing is we're hoping to create geographies of excellence and collaborate with local partner organizations, support them in being able to take this into their local geographies and contexts, and create geographies of excellence, as we mentioned. And as you can see, in Ladakh, we're already partnering with IICE. We're also partnering with Shamtale Foundation in Rajasthan. We're partnering with Jamse Gatsal Institute in Arunachal. And we're partnering with Akanksha Foundation in Maharashtra. Reshma. Thank you. C learning has a tag team approach, so we always recognize that we work better in as teams and as partners. So that's why you will see a switch between Neha and me here. So continuing with this approach, I think the important thing for us to recognize is it's very well to train teachers, but then what? How many of the teachers that we train actually feel confident to take this program into the classroom? So we may train a huge number of teachers, but what does it mean? How does it translate into the school system in terms of implementation? So, one of the things that we have recognized in the last 4 years of being here is that continued learning and practice is critical for the success of C learning. And for that, what we recognize is we need to begin to understand ourselves better. So, a longer
based training program that focuses not just on understanding the theory and the content, but also developing the practice. Because see, learning is a set of practices that we take into the classroom, but which we take back into the world to navigate this world. So, Chalo Mile Khud Se is a longer duration, extended engagement program, which is approximately 50 hours spread over 8 months and divided into three phases. So, what it really means is not just do we introduce the and train teachers, but then we handhold them over a period of time so that they feel confident to be able to take this into their classroom successfully. What we're also hoping to do is collaborate with states to work with them on the state curriculum framework. We've tried a little bit of that in Rajasthan and we've seen great results because NEP is a program which is created at a central level, right? It is a policy. And for the states, we've recognized that the states struggle to actually operationalize that policy on the ground. How do you really take the policy to a point where it reaches the classroom? So what we've done is we've partnered with organizations that have helped place experts to create drafts of state curriculum framework that can help operationalize NEP. All right. And I think one of the important pillars, really, for us to begin to see if this is successfully being implemented is the research element. And at Sea Learning India, we have embarked on a 3 year long term research program. We have completed the first year of it. We are in the second year. This is with Akanksha Foundation, which is based out of Mumbai and Pune. But I think the important thing for us to recognize is that we are always in a hurry to know the impact. But do we really recognize that the implementation is the most important part of the story? Because how do we know that it is being implemented in the manner in which will give us the impact that we hope? So, this program really helps us to understand what is the best way in which implementation can support us to get the impact, to get the results that we want. And what is this India story? Much of the research in the space of SEL comes from the West. There is almost zero research within this country or in Asia or in any other part of the world. So we are really looking to create research and strong foundations that support not just the need but also the understanding of the fact that research is a critical element in anything we do. And I think one of the important parts is also it must be sustainable. And what we mean by sustainable is that for anything to be continued, there has to be a consistency. So, really looking at if today I am not there, will this program continue? If tomorrow I do not have the support, will this program continue? So, how do we establish that to make sure that generations continue to benefit irrespective of whether there is support at a higher level, whether it is leadership or even within the school, teachers who are experts in this. So, really creating that capacity within school systems, organizations, and wider communities. All right, now it's my turn again. Um, I think it's important for us to share with you, based on our experience, what are some of the prerequisites that we have seen for implementation to be successful? And I share this with you with humility, saying that it is still a learning process. We are still in the very nascent stages. So, what we learn is very much from you, what you share with us. One of the things that we have recognized is that training must be at multiple levels. Not just do we train teachers at the grassroots level, but we also train master trainers, what we call L1 facilitators, those who are adult trainers. And then further up, we have individuals who then create master trainers or create these facilitators who will go out. So training must happen at multiple levels. Another very important part is integrating learning and practice. If we only spend and invest time in just training our teachers, but there is zero practice in actually being able to bring in this curriculum, just like अगर आपको सीखना है कोई समझो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं अगर आप उसको बजाएंगे नहीं खुद
So how will you teach that? You must know what you are teaching. So it is very, very important and critical for teachers to also begin to upnow it, to begin to understand it before they take it into the classroom. So this integration of learning and practice, which we do as a longer term engagement, which we mentioned earlier, is one of the very important prerequisites for successful implementation. The other thing is space and time. We have to create the space and the time within the academic calendar for teachers to really begin to take this. We cannot add one more katori in the thal and say, Abhi ye bhi karo. The idea is that C-learning becomes the thal, but for it to become the thal, thoda bahut space aapko create karna padega so that teachers begin to be able to spend time in understanding and taking this. So we have to be empathetic to them as well. Um, Teacher well-being is a very important component of our work. CBCT is the adult program that we have for teachers, because one of the important studies that have come out, and we've seen some of the similar results here, is that the teaching profession is the single highest profession in terms of burnout. 50% of teachers leave the teaching profession in the Western world within their first year. And that is really, really quite alarming when you think about the fact that who are going to be the custodians for our future generation. So, really investing in the teachers as much as the students is critical. The other part is about contextualizing. So, we contextualize in a small way by piloting in smaller lab structures and then design for scale. We're looking at really having support to increase the availability and access by having digital infrastructure. So we can create a hybrid model. So not only teachers who are in places which can access training and come, but also those in far more remote areas can come. And this is something that has been showed in Brazil, which is quite similar to us. Vast country, teachers spread across. The digital infrastructure has been deeply supportive of this program. Also, translation would be of great help. We have the Hindi translation of the C-learning, but really, if it is required to be translated in the local language so that it is accessible, that is another very important prerequisite that would help. And more importantly, patience. This is a long term process. We are committing for the long haul. Behavior change does not happen overnight. So, if we want to really see the effects we are hoping, then we have to give this time. It cannot just change because I'm not getting results. So, it is about a commitment for the long haul. And we wanted to just end with this quote. My eyes saw that what no human should witness, gas chambers built by engineers, children poisoned by educated physicians, infants killed by trained nurses, women and babies shot and burned by high school graduates. So I'm suspicious of education. My request is help students become human. Our efforts must never produce learned monsters, skilled psychopaths, educated illiterates. Reading, writing, arithmetic are only important if they serve towards making our children more humane. Thank you. Thank you, Head of C Learning India, for widening our vision. It's true that children are great imitators, so give them something great to imitate. I heartily welcome the students of primary school Skala Yogma to perform a welcome song.
We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Ton kundubin, ngati ton kundubin, ngati ton kundubin, shashi. Oh, semla ichezyon, ngala rewaram, ngati ton kundubin, shashi. Ngatang chik tu dilin, ngatang chik tu dilin, ngatang chik tu dilin, shashi. Oh, semla ichezyon, malari ora, titon kundubin, shashi. Ngatang jiko siang mit, ngatang jiko siang mit, ngatang jiko siang mit, diri. Oh, semla ichezyon, ngalari warang ngatiton kundubin shashi. Tangpesan batarin, tangpesan batarin, tangpesan batarin, shashi. Oh, semla ichezyon, ngalare warang ngatiton kundubin shashi. Ngatiton kundubin shashi. Ngatiton kundubin shashi. Thank you so much for your wonderful performance. Please give a huge round of applause with that. This song did truly encapsulate our passion and intention of overcoming all the hurdles and challenges that we may face in our path. We shall truly overcome. Next, I would like to invite students of Middle School Ganglis will presenting a dance to showcase the pride that we Ladakhi people have towards our land and our culture. Everyone, please welcome them with a round of applause, please. Thank you.
For any initiative such as sea learning that has the potential to benefit the future generation, it is utmost importance that all these stakeholders are dedicated and work together hand in hand. And for Ladakh, it is important that both the elected representatives of LHTC Leh and the administration of UT Ladakh work in cooperation. So now we would request our today's chief guest, Honorable CEC Leh Advocate Tashi Galson, to address the Sea Learning Conclave 2023. Director, School Education, Baldan साहब, Deputy Secretary स्पलगुन साहब, और हमारे गाइड के प्रिंसिपल चेतन साहब, I think you're from the Sea Learning and others
delegates from the Sea Learning team here, respected school principals, teachers, the guest presence on this occasion. A very good morning and July to everyone. I think our traditional learning methods are based on this sea learning concept, but it has been diluted over the period. And at the very right time, I think His Holiness Dalai Lama ji has realized that we should imbibe the traditional values, the traditional learning and teaching methods in our education system in this 21st century. And it from the speakers who have spoken earlier here, I think it is evident and it is realized that over the period, our children's in schools and our teaching faculty in schools are losing the traditional values that we have carried forward from our ancestors, and due to which students are suffering, people are suffering, no emotional, no ethical values are there in your homes. Whenever you go outside, you will see the people are frustrated. There is no values for emotion, no compassion. So I think over the period, particularly 21st century, we have witnessed so many ugly things that is happening around the world. Be it the war, be it killing each other, shooting in schools, so many things. You know, even we have probably encountered with so many stories of disturbed family members. When I was practicing as a lawyer, I used to come across with so many this kind of stories, where parents are disturbed, families are disturbed, so the child is also disturbed. His behavior has changed over the period. He is not doing good in schools. He's having bad companies. He's starting doing uh, things which are not good for your health. For example, they are involved in drug activities, so many things, even in theft cases, so many things. I have come across many such events in Ladakh, and when we discuss with each other, we realize that, this emotional, that values, these sentiments, that family bondings, this, that relationship people used to enjoy are missing at their home. And when they go to schools, they also been ignored. you know their problems are never been understood by the teachers also. It never understood by their parents. But when they go to schools, they feel that my problems will understand by the teacher. But in schools also, teachers also usually ignores the problems what the students has in his mind. He has completely been ignored. His problems are never been tried to understood.
or understand. So that is why, you know, over the period, we have realized that societies are, leading to some different kind of, atmosphere, different kind of things, you know, and very unusual things happening around us. There's no compassion in one's heart. So I think whatever this sea learning concept has been conceptualized by His Holiness Dalai Lama, I think he genuinely realized that now it's a high time that we should, you know, start focusing on our traditional learning and teaching methods, which carries the emotion, ethical values, and the compassionate values that one should possess. So I think very right thing is, you know, happening now, and I'm very happy today that we have trained more than 500 educators for sea learning activities, and we have a L1, facilitator, also available in Ladakh. Also, I think there are around 5 facilitator who can train further to other educators. So we are going in a very good direction. Uh, I am very hopeful with this director school education, Mr. Baldan, and his team, that we should be the first union territory who will adopt sea learning in all our schools, and we will showcase that the values that uh, His Holiness Dalai Lama ji wants to give to the people will genuinely be seen in one's heart and mind in days to come. And this should be genuinely practiced. Even I think statistics shows that our schools also has quite a problem. There are lots of drops out also. So what are the reasons why there are dropouts? And you must have seen in news, so many youths are involved in so many other activities which are not good for the society. Not good for themselves for sure, but not good for the society also. So our society is also going in a not so very good direction. I think now it's a high time that we all should come together and fight for the genuine cause. We have our society was never like this before. So I think we now it's a right and appropriate time that we should uh, bring it to the normal that Ladakhi society used to be. Very loving and kind and compassionate people we are generally, and it seems to be losing in youth. So that cause we have to understand. And that is the thing main objective of sea learning. So I think I'm very hopeful that we all will come together and genuinely work for it. Uh, you know, so that's it. I just want to say that, and as far as Hill Council is concerned, the UT administration is concerned, we have extended our support to all the good cause that is happening in this new union territory. For this cause also, I'm committed that we will extend all kind of support, all sort of support for sure. And any other issues, whatever we have to in over the period, we have tried to train our teachers also. Last year we provide, English language skills trainings to our teachers in a very large numbers of trainings we have provided. We have provided in Khalse block and Le block, I think last year. And this year also we will provide similar trainings to our teachers. And I think by and large the teaching community have contributed a lot to the Ladakhi society. For that I want to extend my thank you to all the teachers. You have shaped the future of Ladakh,
and the future of Ladakh is in your hand. So I think your capability, you are skilled, and on top of that, the His Holiness blessing and His Holiness values. If we adopt, I think Ladakh will be a number one union territory for sure. So thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, sir, for an enlightening speech. We hope that our administration keeps supporting such kinds of learning in future too, and continues to do so in the future. Now, I would like to invite Sri Mushtaq Ahmed, Chief Education Officer, Kargil, to express our gratitude and deliver the word of thanks. Highly respected Honorable CC Saab Tashi Gerson ji, worthy Director School Education Paldan ji, worthy Deputy Secretary Rigzins Paldan ji, representative resource person from Sea Learning Conclave, Adab Jule. I am delighted to be here today on the occasion Sea Learning, which stands for social, emotional, and ethical learning, represent a powerful approach to education that focuses on nurturing the whole person, not just for their academic ability, but also their social and emotional well-beings. Sea learning equips teacher with the tools to help our student navigate these challenges with resilience and empathy. By fostering social and emotional skills, we can empower our student to communicate effectively, manage their emotions, and build meaningful relationships. The C learning program will provide teachers with practical strategies to integrate social, emotional, and ethical learning into their classrooms. Through this training, we can create environments that are not only conducive to academic growth but also to the personal development and character buildings. Let's work together to nurture a generation of students who are not only intellectually bright but also emotionally intelligent, empathetic, and ethically responsible. I, on behalf of Education Department, thanks to Honorable C.C. Tashi Gelsinji for sparing a precious time to encourage us, our department. I also thanks worthy Director School Education Paldanji, under whose guidance such a beautiful and wonderful program you organized. I am also thanks to worthy Deputy Secretary School Education for sparing time for us. I again thanks the resource person Thupten Kaldan, your director DOCA, Government of Arunachal Pradesh. I also thanks Ms. Drima Yuntan Ringu, Assistant Director SCRT, Mr. Miss Rishma Premal, Operation Head, South India Sea Learning, Nia Bhatia, Operations Head North India Sea Learning, Miss Pooja Tashi Namgyal, Lobzang Wangmu. Thanks, lot of thanks, heartfelt thanks. I also thanks Chief Education Officer Lay, Principal Diet Lay, and his team for organizing a such wonderful program on sea learning in Conclaves. I also thanks all the principals from Kargil, Leh, ZDOs, headmasters, and other dignitaries, academicians, media persons. Again, I thanks all the dignitaries from myself
on behalf of Education Department. Thanks. Thank you. Thank you, Sir Mushtaq Ahmed, for your gratitude speech. Now we will break for high tea. We will continue with our session second. So do kindly rejoin us after 30 minutes. Thank you.
Hello, hello, hello. Mic check, check. Hello, check, 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 check. Mic check, check, check. Hello, check, 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 check.
Hello. Aka yale Alto 85 some look 528 Alto number. Yena na. Okay. Right. मुझे क्या बोलना होगा थोड़ा जर्नी बताओ ओके 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 मैं को यूज 세제만 यूज 세제만 잘 오케이 이나 세제만 अच्छा अच्छा ओके पहले ओके तमारा आना ही और पर स्पीकर सामान थोड़ा वो है ना ओके जुने Si learning bola tinjus. Si learning robot lada pata lokala chisus kariyale taksa tupa gotu school tam ne gotu skapta taksa tam tuniyo sirkat. Yam wala ni chichen lisa taksa katilla ship sosu muri kusama moda. 오케이 예전에 야네다 이 C-learning program 보 나타 2019 에 launch 했던 거 globally 시도돼. 테스팅 나가자 19 2020 나와 તેને આજે એજ્યુકેટેડ ટ્રેનિંગ બહુ સ્ટાર્ટ હોતો ને ગોમાં આજે એમરી છોકમાં તેને એજ્યુકેટેડ ટ્રેનિંગ સાલતે નો સ્યોદાલે તેના ઇના લેના હતા ટીચર શનાજી પાર્ટિસિપેટ જોસ્તે નો સ્યોદાલે this thing na તેને હતા ટીચર સુનલા તેને L1 ફેસિલિટેટર સે ચાન્સ આવતો
skudale sonbangaje L1 facilitator training ang jospinde tene testing na ngata properly lena tene ngaje diet gyute L1 facilitators one tene educator training ngada na ika zateno tene ngaje naning tene 6 July ya tene yu gozuk josmile tene testing ne tene 9 phases na ngaje ई training bo start choste tene teacher lagbag ngabja thal janga je ई training bo transfer asade testing ne yang ngabja isolated yang jaga khachi je se yang sanskar na sonspen le tero ngaje test of sea learning je one day program chospen le teuman pa yang inna le ngata jaga ni sumja tene ngaje teacher mang pe nyam po ई program bo choste ta teum teacher un trends so testing ne tene school mangpe na tene ngata ई program bo dule ne skudale ta future ngaje plan bo tena ne tene ई program bo Ladakh se school changme na kerchesle jazana yu ma kapchan program in kan bo ngata sama kena skudka ta daksa government yang ngaje ma support kela top state tene Ministry of Education e chungna tene funding ang kela ngaje top state talo skudka ta ई program bo tene ngata continue chuche sustain chuche sana tene 수상에 다로 토멘지게 놓 스케파타 future나 tene ma rewa chonga ई program bo ma gyalana ya bo dalada se government private school 상매나 ई program bo ta kiemye jese rewa in kasa ta you properly ngata formally school curriculum na integrate tano ma chana wale ta tio tong policy matter even a time go shiches but government ngata daksa 대왕 assure just no ngata I program ngata curriculum na yong se so ba rewa tena chonle tene daksa samsing na nyera ika ziksen no suchang me interest show choni no cc sa bang daksa assure just no ngaje pura support chon zekte tena so UT administration na support yote no skyot pata yung cheshen time na tene yu ngata curriculum e part chi gyusche da ngati rewa teo cha chi na tene ma use tene ngata sustain cha no systematically dul cheno asale tang ngaje naning private school teachers nang both pende ma pojik school mang pona tene thatpe sperate oragle private school ngata chinmo khachina da sai program dule ne जैसे कि Ladakh public school Islamia public school Lamdon senior secondary school kauna na role ang mang pueto no chugu chupa khongune I program bo daksa shulen wayale chuta ta khongune tarung ma systematic way na tarung medan wayale tanga tang yu tarung zote ngata logic mena machano ngata iro start sote even properly ngata demek thap demek yam po implement chala tarung time gorchen wayale but rewate na no ngata I program bo ma gyalanya po ngata sting na school changmena shulungen je kasa Ladakh kumani taksat kono nyarange. Ladakh eu silaning go yung kasa chiktas Ladakh sa ta yu ta daksa ta immediate to kaspo no ya le chadana behavioral changes po ma lamek man pala le ko ngata lo chigina gyurja izam jigong sa tok ze juches po te urzun chachino ta ngata in program bo sustain board na continuously ngata I practices on teacher no tugune na daily ngata board na tene denbe ko daksa ngata international level ga research yote no pala le findings ma gyala to positive finding yote tene te impact ko ngata 이런 용천 왜래 but 대비 비하가다 이쪽 다 지대적 다만한 short term 지나야 이거 가다 이쪽식 임팩트 차로 그제 나때와야 무슨 지체서 와다 but 대비 비하가지라다는 계속 메커니즘 장met다는 기가에 가능하지 이유 SS 전기 임팩트 가족식 리스트 도서관 다때오 낙사 때네 expert 그나 에머리 experts on sea learning india expert 공원이 mechanism 직 device 전 요때 뭐야 so pa tourism ada tene assessment ang demo just chung en cheso pasada ya personal life la effect sam second chig yang yang ta personal life ga ta dinga jung en cheso rakhala de ta sea learning just ta lo sum ji song ala ne tene ina sam shi nga ta practices yo teo daily basis the miju but continuously ne chun yo ta la de so pa ta ngara emotional azu kun chai regular chu cheso na den de tok chakan sabik ha go ara ne 다 잠식 성된 들간 뭐다 스케일 지나다 중에 general but
망용 바락 차간보 하고 갔어. Try to yang baksa ice ang lipstick japan 진짜 tsuna ice nya pula zachisin water 다 유타 policy matter 농아 제르년제만 하라데. but ngaje 공원에 ngaja 고만아 팔아 support training 용스텐 스kyopata 대화티나 좀 ngaje 이 델보 퓨처에 나올루세 달라네. 자드랑 아타코 준 레벨 지가 농이 양 공원에 고델 보렌즈랑 연체스 몇 개야래. but nga 잠시면 나 이쪽 like minded nga organization 운나 아단 델 루스나 이 프로그램에 피해게라 시켰죠. 가서 Nyemia sitting one those in the senior lecturer in diet leka, in a L1 facilitator in the learning. Thank you. Ika Tadiringaji invite po head of the institution some much was the higher secondary principal into ZDOs into high school headmaster. Tate na ne mang poji thawin bare thusma to a yoto, but mang chao ataika 70% of shishkipton. Kasal, the school luna ata look to na banjing ataika shkipton. Oh, thank you. You speak French. Speak again. I was not making someone this Sure. Yeah, Ladakh se dana da video just to what do that after Sa gachurko. I programma già en medicina. Già c'è per che se già c'è per c'è per bomba. Mi dà sto Yeah. Okay. Welcome to the session. Sister Celine, to Generia. Bring yourself. Second session to that. To that. Oh, no, second session is just a little. That's why I have to ask you invited. That's what make it a second session. Oh, this is again. You don't need to be very just. Second session. No, I don't know. It's the measurement. Ini kan seperti woman ini saya kan bisa I'm flexible, problem, whereas with years old. Now, but more Hello. Welcome back to the session second.
Now I will request Director School Education UT Ladakh, Shri Thering Paldan, to come on the stage and present memento to our special guests, speakers. I would like to call Shri Thupten Kaldan, Director Department of Karmic and Adhyatmic Affairs of Government of Arunachal Pradesh. Please round of applause for them. Next, I would like to call Miss Dheera Peer, Akansha Foundation from Maharashtra. Please welcome them with a round of applause. Thank you. Next, I would like to call Miss Pooja Shamtalia from Rajasthan. And for presenting cultural program for today's very event, I would like to call Headmaster Government Middle School Gangles. Please welcome her with a round of applause. Thank you. Next, I would like to call Headmaster Primary School Skara Yokma. Please welcome her. And at last, Principal Islamia Public School. And Principal Islamia Public School for the cultural program. Please welcome her. Please, thank you, thank you. Thank you, Sirla. Thank you. Moving on to the second session on sharing experience of C-learning implementation. We would like to invite our experts from Shamtalya, Akansha Foundation, and representative from Government of Arunachal Pradesh for the panel. After the presentation, there will be a Q&A session too. Thank you. So the first Pooja is going to do it. Yeah. First Pooja will come, and then after she finishes that. Okay. So this time I'm leaving because it should be all in 3 times. Okay. Where's Pooja? Now I request Pooja Singh from Shamtalya to take the session, ma'am.
Hello, जुले सबको. Good afternoon. So I'll talk about मैं शमताले के काम के बारे में बात करूंगी. शमताले एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान में पिछले 7 सालों से काम कर रहा है, 7 years. And if you see our vision, the vision is all children realize their true potential through meaningful, relevant and compassionate education. शमताले ने जब अपनी जर्नी राजस्थान में शुरुआत की थी तब हमें नहीं पता था कि हम दिल्ली और बिहार में भी काम कर पाएंगे, बट द लर्निंग ऑफ शमताले इन राजस्थान हैज बीन सो मीनिंगफुल कि बिहार और दिल्ली में वो काम करना आसान लगा. सो द वे वी वर्क उसके बारे में बता देती हूँ. हम 3 लेवल्स पे काम करते हैं. पहला लेवल है कि डायरेक्टली स्कूलों के साथ काम करना, जहां पर हमारे फैसिलिटेटर्स हमारे टीचर्स के साथ, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनके साथ काम करते हैं. सेकेंड लेवल है हम कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं ऑन द गवर्नेंस, बिकॉज हम सब जानते हैं कि बच्चा जितना समय स्कूल में बिताता है उतना घर में भी बिताता है, एंड पेरेंट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल उनके जीवन में. सो उनके साथ कैसे शिक्षा को ठीक किया जाए और उनका कंट्रीब्यूशन कैसे हो सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, that's one part of the work. And the third part of the work is we work with the system. We work with SCRT and समग्र शिक्षा, जहां पर डाइट के साथ काम करना और SCRT के साथ डायरेक्टली काम करना, और खास करके शमताले का जो काम है इज रिलेटेड टू वेल बीइंग. तो ये 3 स्तर पे हम काम करते हैं. I've been asked to talk more about system, तो सिस्टम के कैसे सिस्टम में किया है वो मैं ज्यादा बात करूंगी. तो रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया और उसमें अगर हम देखें तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप टू इंटीग्रेट सोशल इमोशनल लर्निंग करिकुलम हमारे स्टेट करिकुलम के साथ. जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है जो राजस्थान में भी बन चुका है, वहां पर शमताले ने पॉलिसी लेवल पे इस तरह से कंट्रीब्यूट किया है कि जो फोकस ग्रुप पेपर हमने लिखा है हेल्थ एंड वेलबींग और गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, वहां पर हम कैसे पॉलिसी लेवल सोशल इमोशनल लर्निंग करिकुलम को पिच कर सके. क्योंकि अब अगर एनईपी ऐसा कहता है और ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल चीज डिजाइंड है तो एक नई चीज बनाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये करना है कि स्टेट के संदर्भ में उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करना है. सो इफ एमरी हैज अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो एक बात करता है सिस्टम सोशल कंपैशन एंगेजमेंट के ऊपर, उसको के कॉन्टेक्स्ट में, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में उसी फ्रेमवर्क को कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स द वर्क दैट शमताले has been doing with the state from last 3 years. So about little bit about सिंपल थिंग. सो ये चार्ली चैपलिन का कोट लिया है मैंने कि सिंप्लिसिटी इज नॉट अ सिंपल थिंग. हमको सबको पता है कि वेलबींग जरूरत है, हम सबको पता है कि ये करिकुलम में जाना चाहिए, बट इट डजंट सीम वेरी सिंपल. बहुत मुश्किल होता है एट अ वेरी इम्प्लीमेंटेशन लेवल. तो हम क्या कर सकते हैं अपने फ्रेमवर्क के थ्रू, अपने पॉलिसी के थ्रू, अपने करिकुलम और टेक्स्ट बुक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो हमें साथ मिलके सोचने की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं हमने राजस्थान में किया है. देयर इज अ चॉइस दैट वी कैन टेक. इन गवर्नमेंट स्कूल्स अलग से सोशल इमोशनल लर्निंग का पीरियड नहीं है, बट वी नो दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सब्जेक्ट में, या उसको हम एक फुल्ली एक सब्जेक्ट की तरह लॉन्च कर सकते हैं. दैट डिसीजन इफ वी मेक एट स्टेट, टेक्स्ट बुक्स उस तरह से बनेंगे. टेक्स्ट बुक उस तरह से बनेंगी तो टीचर्स की ट्रेनिंग उस प्रकार से होगी और उस तरह से होगी, एंड टीचर्स की ट्रेनिंग उस तरह से होगी तो शायद बच्चों के साथ वो चेंज आ पाएगा. सो टीचर्स ट्रेनिंग में एक मैं टीचर का वीडियो है जो शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ. ऑडियो नहीं आ. सभी प्रकार के परिवेश और क्षमता वाले बालक बालिकाएं आते हैं. कई बार जब हम हमारे लिए जो परिणाम है वो सुटेबल अगर हम नहीं अचीव कर पाते हैं तो उस समय हमारे ऊपर एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं. तो अगर एक केयर गिवर, एक सिस्टम में केयर गिवर टेंशन में है और स्ट्रेस में है, डू यू थिंक कि क्लासरूम सेफ बनेंगे? डू यू थिंक हम बच्चों तक वो पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते. और वहां पर आई थिंक हमारे डाइट फैकल्टी या हमारी जो SCRT फैकल्टी, अगर आप उनसे भी बात करें कि उनका लाइफ कैसा है, दे ऑल्सो फील द सेम थिंग. तो सोशल इमोशनल करिकुलम
बच्चों के लिए तो हम सोच ही रहे हैं, but the important aspect that I want to really focus on is your personal well-being. हमारा खुद का well-being, अगर हमें एक practical tool मिल रहा है to integrate that in our life, in our personal, for our personal well-being, तो अगर टीचर स्ट्रेस महसूस है, अगर डाइट का फैकल्टी स्ट्रेस महसूस है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि वो करिकुलम में जाके वो चीज हो पाए. तो at Shamtale, we also focus a lot on giving care to caregivers. जो caregivers को care दे, तो क्या personal well-being के तौर पे हम उसको कर सकते हैं. So when we wrote teacher education paper, जो हमारे 4 SCFs हैं state में, school education, teacher education, ECC and adult education. Teacher education में pre-service, in-service है. Can we in pre-service have a subject for social emotional learning for teachers so that जब वो system में आ रहे हैं तो वो तैयार होके आए. तो इस तरह की बातें policy paper में अगर लिखी जाए तो एक जब शिक्षक स्कूल में on board होके आता है, already knows कि मेरे पास वो टूल है जिससे मैं क्लासरूम को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, जिससे मैं बच्चों के जीवन को बेहतर कर सकता हूँ. एंड वी ऑल नो कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं. टीचर ने पहले वीडियो में बोला था, आवाज नहीं आई, कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके जीवन में हम कैसे प्रभाव डाल सकते हैं. तो एक एक्टिविटी करते हैं. आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगी. करिकुलम, तो ये टीचर का पहला, जब भी आप जाएंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे तो टीचर का पहला रिस्पॉन्स होता है, अरे फिर से एक एडिशनल काम ला दिया. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यंगर चिल्ड्रन. ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है और ये प्रोग्राम को जरूरत ही नहीं है. मेरे को तो मेरे लाइफ में भी जरूरत नहीं है और मेरी भी जरूरत मेरे को भी जरूरत नहीं है वेलबींग की. आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल. तो ये कुछ फर्स्ट रिस्पॉन्सेज मैंने कैप्चर किए जो आपको जब भी आप करिकुलम लेके जाएंगे ये प्रतिक्रिया, ये रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं. व्हाट्स इन द करिकुलम फॉर टीचर्स. अगर आप देखें कि टीचर्स के लिए इस करिकुलम में क्या है, सारे ही कंपोनेंट हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में. और मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ हमारे लाइफ में, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द सिस्टम इफ वी डोंट हैव पर्सनल प्रैक्टिसेस, इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर ट्रेनिंग्स. अगर हमारी ट्रेनिंग में वो नहीं है तो एक एक्टिविटी आप लोग करिएगा और फिर मैं माइक पास करने के लिए बोलूंगी. एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जब आपका कोई क्लोज फ्रेंड बहुत तकलीफ में था, लाइक he was suffering or she was suffering. सोचा सबने, और वो तकलीफ में है तो क्या वो 5 या 3 चीज है जो आप उनको कहेंगे? कोई भी बोल सकता है. अगर मेरा कोई फ्रेंड तकलीफ में है तो फर्स्ट आई से कि काम डाउन सबसे पहले तो, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जब टेंशन तो वो बिगर पिक्चर नहीं देख पाते हैं और एनजाइटी की वजह से काफ़ी बारी मुश्किल हो जाता है. सो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि काम डाउन. सेकेंड थिंग कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना. जो भी मुश्किल है, जो भी तकलीफ है, ये आपका मतलब दिस इज़ नॉट, ये अंतिम नहीं है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट प्रॉब्लम. दिस इज नॉट द फर्स्ट प्रॉब्लम. आपके लाइफ का ये पहला प्रॉब्लम नहीं है और ये आपके लाइफ का लास्ट प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है. सो आपकी दुनिया खत्म नहीं हो रही है इस प्रॉब्लम की वजह से. एंड थर्ड थिंग मैं ये कहूँगी कि एक स्टेप बैक ले लो, है ना. कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो या फिर डू समथिंग जिससे आपको अच्छा लगता है. आपकी कोई भी हॉबी होगी, या आपको मूवी देखना पसंद है, आपको गाना सुनना पसंद है, आपको मतलब अपने माइंड को उस चीज से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. थैंक यू. अब आप लोगों ने अच्छा, आप भी ऐड करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड. आपने काफी अच्छे पॉइंट्स रखे. मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ. मैं लॉर्ड बुद्धा के एक लाइन से उसको समझाना चाहूंगी कि नथिंग इज परमानेंट. सिचुएशन arises and passes and this shall also pass. वंडरफुल, थैंक यू. अब ना इसमें थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा. अगर यही मुश्किल परिस्थिति आपके साथ होती है तो आप वो 3 चीज अपने आप को क्या बोलते हो? ऑनेस्ट आंसर. हाँ, anytime, whenever it is with me or with others, I just take one story in mind. एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, एक ऐसी लाइन बताओ जिसे सुन के सुख में दुख हो और दुख में सुख हो. ये भी गुजर जाएगा. थैंक यू. कोई और है जो अपने आप से क्या क्या बात करता है वो बताएगा कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ अच्छा नहीं गया और आप अपने आप से कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑनेस्ट रिस्पॉन्स.
Why me? मेरे साथ ही क्यों हुआ? सर ने बोल दिया आज फ्रंट उससे. Anyone else? मैं तो बहुत सारी चीजें बोलती हूँ. मैम हिज होलीनेस का एक वर्ड्स ऐड करना चाहूँगा. हिज होलीनेस ऑलवेज सेज कि अगर आपका सॉल्यूशन है तो टेंशन क्यों है. समटाइम हम ही सोचते हैं कि बहुत सा टेंशन तो गुजरता है, बहुत सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि व्हेन देयर इज अ सॉल्यूशन तो इसमें टेंशन क्यों रहना है. तो इसलिए हम ऐसा करके अपना को रिलीफ में बैठते हैं. If there is a problem to a solution, no need to worry. And if the problem doesn't have a solution, no point of worry. ठीक है? हाँ. I, ऑनेस्टली जब मेरे साथ ऐसे सिचुएशन आता है तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा हुआ है तो आई हैव टू कॉन्कर इट. I have to overcome it. Yes. So there's this harshness also कि I have to overcome. क्या आप लोग Overcome and I'll conquer it. क्या आप लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं? जब आपका कोई लव्ड वन सफर करता है तो आप क्या उसको बोलते हैं, पर जब आप खुद सफर करते हैं तो आप खुद को क्या बोलते हैं? आप यू वेरी हार्श ऑन योरसेल्फ. मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तुम कितनी स्टूपिड हो, तुम इतना छोटा चीज नहीं कर पाए. यू नॉट अलाउड टू मेक मिस्टेक एज अ टीचर. ये मिस्टेक मैं कैसे कर सकती हूँ? सो द पॉइंट इज कि जो फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट किया जा सकता है, इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए, वो सामान स्किल्स की बात कर रहा है जो हम सबको जरूरत है. सो इट इज असेंशियल. वी नीड टू जस्ट थिंक कि वो किस फॉर्म में लद्दाख के लिए दिखेगा, वो किस फॉर्म में यहाँ के लिए कॉन्टेक्चुअल होगा. बट एवरीबडी नीड्स सेल्फ कंपैशन. ये एक्सरसाइज, इसमें कई एक्सरसाइज है जो मैं अभी आप लोगों के साथ करूँ, आपको लगे हाँ मुझे इसकी जरूरत है. So that's the power of the curriculum, I guess. My journey as a sea learning educator, मैंने sea learning 2018 में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. Currently, I am the founder of Shamtale Foundation, but I've never gone away from classroom क्योंकि आपको classroom से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो जब ये curriculum as a draft मेरे पास आया, before launching it with my organization or pitching it, it is very necessary कि मैं इसे खुद करके देखूं. जब तक आप खुद करके इसको नहीं देखते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप इसे पिच कैसे करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या होगा. जो चीज राजस्थान के लिए काम करती है वो बिहार के लिए नहीं करती, जो बिहार के लिए करती है वो दिल्ली के लिए नहीं करती, एंड आई एम श्योर जो बाकी सब जगह पे कर रही होगी लद्दाख के लिए नहीं करी. तो क्या एज अ ग्रुप जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, कैन वी, इफ वी फाइंड दिस करिकुलम एज so meaningful, so insightful, can we implement that in Ladakh in a different context, like it can be contextualized. उसको हम क्या context में बदल सकते हैं. And मेरा personal journey as a educator, मैं कहूँ sea learning के लिए has been very very insightful. आज से 7 साल पहले मेरा response on my problems and my resilience towards my challenges was very very different. और आज मतलब मैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को. दिस अ वेरी रीसेंट एग्जांपल. हम लोगों को 2 दिन 3 दिन पहले पता चला कि हमको प्रेजेंट करना है, एंड यू गेट ऑल वर्कड अप ना कि अरे बाप रे स्टेज पे जाना है, प्रेजेंट करना है. That's where sea learning skills come in place. क्योंकि अगर आपको पता है कि you already have the content, आपको पता है आपको करना है, you just regulate yourself and be, क्योंकि बताना तो वही है ना जो करना है, but that mind operates in a very different way ना. डर लगता है, अब 2 दिन पहले अभी क्या करेंगे, ये क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा. So that skill I have got through the curriculum, and I think it makes you very different human being, and the impact that you make. आप हर दिन जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक स्माइल करते हैं, अपनी कहानी शेयर करते हैं, आप एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, और सरकार में भी वो, गवर्नमेंट में भी वो भरोसा जता पाते हैं. यंग पीपल डूइंग थिंग्स लाइक दैट, दे गेट इंस्पायर्ड, एंड you play a very important role as educators and teachers to contribute to the society. So I think आपका रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे बैठे हैं एज एजुकेटर्स. सी लर्निंग करिकुलम में क्या क्या है? तो सी लर्निंग टीम यहाँ पर थी, रेशमा और नेहा थे. आई थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पर आप अगर उसको सब्सक्राइब करते, यू गेट दोज स्किल्स, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने, काफी लोगों ने वो किया होगा, टू सी हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दैट इन द क्लासरूम. आपके पास वो भी एजेंसी आती है कि आप उसे अपने संदर्भ के लिए कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करें, क्योंकि मैं वो कर पाई हूँ, और इसमें अगर मेरी कोई मदद लगे तो आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट लद्दाख. देयर इज दिस पर्सनल प्रैक्टिस एलिमेंट
करिकुलम में जो टीचर को खुद क्या पर्सनल प्रैक्टिस करना है वो बताता है. And CBCT, cognitively based compassion training, which is for instructors, it's a must for all the teachers because it helps you to आपके पर्सनल वेलबींग पे काम करने में मदद करता है. एंड यू गेट दैट एजेंसी की सी लर्निंग करिकुलम मुझे क्लासरूम में कैसे ले जाना है. मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है और मैं पिछले 1 साल से श्रमदालय के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत से सीखने के अवसर मिले हैं, जिसमें एक अवसर मिला मुझे प्रतिरोध क्षेत्र के बारे में जानने का। तो प्रतिरोध क्षेत्र मेरे जीवन में किस प्रकार से लाभदायक हुआ, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि कुछ दिन क्या होते हैं कि हमें तनावपूर्ण रहते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, उदास होते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, तो कैसे हम अपने उच्च क्षेत्र से कुशल क्षेत्र में लौट आए, उसके लिए मुझे ये बहुत मदद किया है। उसके लिए कुछ छोटी-छोटी टिप्स दी गई है, जैसे ठंडा पानी पीना, रंगों को देखना, अपने आस-पास की आवाज़ों को सुनना, 10 तक उल्टी गिनती गिनना, कई प्रकार की ऐसी छोटे-छोटे स्टेप या प्रक्रिया बोल सकते हैं, जो उनको वापस उच्च क्षेत्र से निम्न कुशल क्षेत्र या फिर निम्न क्षेत्र से वापस कुशल क्षेत्र में आने में मदद करती है। तो उसके लिए मैं श्रमदालय फाउंडेशन तथा सील की इस नई प्रक्रियाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि राजस्थान में हम लोग बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं. वो कह रहे हैं रेजिलियंस जोन के बारे में बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जब मेरी ट्रेनिंग हुई सी लर्निंग की और मुझे रेजिलियंस जोन के बारे में पता चला, तो एज अ टीचर मैंने क्या किया कि मुझे ये समझ में आया कि मुझे लो जोन या हाई जोन से ओके जोन में वापस कैसे आना है. और उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज बताई गई है सी लर्निंग करिकुलम में, जैसे ठंडा पानी पीना, आसपास के रंगों को देखना, उस बहुत मदद किया है ताकि मैं क्लासरूम में वापस इमोशनली वेल महसूस करके उसे फैसिलिटेट कर पाऊं. तो वो शेयर कर रहे हैं वो. सो गेटिंग ट्रेनिंग, सिर्फ सी लर्निंग की ट्रेनिंग को प्राप्त करके आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि अब मेरा काम हो गया, तो वैसा नहीं होगा. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. सी लर्निंग करिकुलम की ट्रेनिंग, जो सी लर्निंग फॉर्मली आपको ट्रेनिंग देती है, उसको करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जगह में, आपके जो भी वो कॉन्टेक्स्ट है, वहां पर फॉलो अप ट्रेनिंग्स कैसे होने चाहिए. तो छोटे छोटे ट्रेनिंग्स क्या होंगे जिससे वो फॉलो अप होता रहे. क्योंकि आपने एक एजुकेटर प्रेप कर दिया, उसके बाद आप सोचेंगे कि क्लासरूम में जाए, I don't think so it is possible. So what we did at Shamtale is, after we received a formal training from C Learning, we identified कि छोटे छोटे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स क्या होंगे जो कंटिन्यूस तौर पे हम लोग टीचर्स को देना चाहेंगे या डाइट फैकल्टीज को देना चाहेंगे. फिर कनेक्ट करना फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंटेशन से. तो एक चीज डिजाइन हो गई है बड़े लेवल पे, नॉट नेसेसरली इट विल वर्क इन इम्प्लीमेंटेशन. ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम काम करते हैं तो उस करिकुलम की स्टोरीज बदलनी पड़ेगी, उस करिकुलम के एग्जाम्पल बदलने पड़ेंगे. क्योंकि नेल्सन पिज्जा खाता है अमेरिकी करिकुलम में, पर राजस्थान में बच्चे दाल बाटी खाते हैं. तो यू हैव टू कॉन्टेक्चुअलाइज दैट, अपनी कहानियां लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो करिकुलम बच्चों के जीवन में कोई महत्व नहीं रखता. और फिर आपको पर्सनलाइज सपोर्ट, मैं बार बार इस पे जोर दे रही हूँ कि पर्सनल वेलबींग पे अगर हमने काम नहीं किया, खुद के एज ए प्रैक्टिशनर अगर हमने काम नहीं किया, तो क्लासरूम में हम सिर्फ एक्टिविटी ले जा रहे होंगे और उसका ज्यादा फर्क बच्चों के जीवन में दिखेगा नहीं. वन थिंग दैट आई वांट टू एंड विथ इज मेकिंग इनविजिबल विजिबल. तो करिकुलम क्या करता है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें विजिबल नहीं रहती, आपको पता रहता है कॉग्निटिवली, पर विजिबल नहीं रहती. वो सारी चीजें जो दिखती नहीं है, जैसे हवा दिखती नहीं है पर हम सांस ले रहे होते हैं, उसको दिखाना शुरू करती है, उसको समझाना शुरू करती है. एंड आई थिंक वो जब हम देखना शुरू करते हैं, दैट्स द पावरफुल पार्ट. But you know, that's the powerful thing that starts happening to you. So all the best to Ladakh for contextualizing C learning curriculum for Ladakh, and अपने बच्चों के जीवन में, अपने टीचर्स के जीवन में वो आप दे पाए. All the best for that. Thank you so much. Thank you, Ms. Pooja Singh, for widening more on the system and highlighting the importance of this program today. We could see how passionately you were talking and smiling and seeing everybody and explaining every and each word to everyone. We are grateful for your presence today. For next, I would like to call Ms. Dira Peer of Akansha Foundation from Maharashtra.
जुले अच्छा बहुत देर से बैठे हैं, तो क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हम खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए? हम लोग एक म्यूजिक क्रिएट करेंगे, ठीक है? और म्यूजिक क्रिएट करने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब फैकल्टीज भगवान ने दे के रखी है। सो हम सिर्फ अपने 2 हाथ यूज करेंगे, 2 क्लैप करेंगे और 2 स्नैप करेंगे, ठीक है? सो मैं एक बार दिखाती हूँ और फिर हम रूम में सब लोगों को साथ में करना है, ठीक है? सो 1 2 3 4 ओके। तो मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 1 2 3 4 2-3 बार बोलूंगी, फिर मैं चुप हो जाऊंगी। देखते हैं हम सब साथ में कैसे कर रहे हैं, ठीक है? 1 2 3 4 ओके। नाउ फास्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके, वी कैन स्टॉप। अब 1 2 हम क्लैप कर रहे थे और 3 4 स्नैप कर रहे थे, ठीक है? अब मैं 1 2 3 4 फिर 3 4 1 2, मतलब जो स्नैप है वो पहले करना है और क्लैप है बाद में करना है। लेकिन ये कैसे करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है? स्नैप से स्टार्ट करेंगे और क्लैप से एंड करेंगे। समझ गए आप? ओके। 1 2 3 4 3 4 1 2 ओके। अभी फास्ट 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 4 मैं नहीं बोलूंगी, आप करो। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। फॉर ऑल द म्यूजिशियंस इन द हाउस, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बढ़िया किया। अभी हमने जो एक्टिविटी की उसमें पहली वाली जो थी वो आसान थी या दूसरी वाली? पहली वाली। दूसरी वाली में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है ना, यहाँ पे बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। ओके। सो जो हम कर रहे थे उसमें हम अपना ध्यान अटेंशन दे रहे थे, राइट? कि मैं अगर 1 बोल रही हूँ तो 1 पे क्या करना है, 2 बोल रहे हैं तो 2 पे क्या करना है। हम अपने माइंड को क्या कर रहे थे? ट्रेन कर रहे थे कि दिस इज हाउ यू वांट टू एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू द नंबर्स। सो सी लर्निंग की जर्नी जो है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। और उसके पहले आकांक्षा फाउंडेशन जहां से मैं आई हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। सो आकांक्षा फाउंडेशन एक एनजीओ है जो महाराष्ट्र में करंटली फंक्शन करता है। उसमें 3 सिटीज आते हैं, पुणे, मुंबई और नागपुर। तो इन तीनों सिटीज में हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ। तो तीनों सिटीज को मिला के 26 स्कूल्स के साथ हम काम करते हैं अक्रॉस महाराष्ट्र। अब ये मैंने इसलिए कॉन्टेक्स्ट दिया कि जो भी मैं बताऊंगी वो इस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होगा कि 26 स्कूल हैं और उन स्कूलों में किस तरीके से सी लर्निंग हम लेके गए हैं। लेकिन अगेन उसके पहले मुझे एक सवाल है कि जब हम छोटे थे और हम स्कूल जाते थे तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री सब पढ़ा है सबने? आप भी पढ़ते हो बच्चे यहाँ पे? यस। तो हमको स्कूल में कौन सी चीज है जो सिखाती है कि हमको लाइफ कैसे जीना है? और शायद आपके स्कूल ने सिखाया होगा किसी ना किसी तरीके से। इफ एनीबडी कैन शेयर, माइक अगर आसपास घूम रहा है तो, नहीं तो आप यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड शेयर कि हाँ इस तरीके से मैंने सीखा मेरे स्कूल में। और आप सब जी रहे हो तो आपको सिखाया किसने? क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है ना, हम सब लाइफ जी रहे हैं। तो इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस तो सीखा, लेकिन लाइफ में जब आप कोई टेस्ट फेल होते हो तो उससे डील कैसे करना है, अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है
तो उससे डील कैसे करना है, ये कौन सिखाता है? टीचर ने सिखाया? हाँ हाँ, सॉरी, मॉरल लेसन से, राइट राइट, मॉरल लेसन से आपने सीखा। और आप कहाँ से सीखते हैं? यहाँ पे बच्चों का टेबल भी है। आपको स्कूल में कैसे सिखाते हैं? गुस्सा आता है तो क्या करना है? टीचर क्या बताते हैं? टीचर बताते हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहते, झगड़ा करने से स्कूल का नाम भी वो नीचे होता है, ऐसा कहते हैं। बराबर है। सो हम जो स्कूल में हम बताते हैं, बिल्कुल स्कूल को वैल्यूज सिखाना जरूरी भी है और स्कूल सिखाता भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो हम बताएंगे। तो ट्वाइस, ठीक है, कोई नहीं। सी लर्निंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाँ, ये है सी लर्निंग का पेडागोजिकल मॉडल। अभी बहुत थियोरिटिकली नहीं, आप यू जस्ट हियर मी आउट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, चाहे आप कुछ भी सिखा रहे हो, राइट? सो इन्होंने जैसे बोला कि टीचर बोलते हैं गुस्सा नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, बिकॉज वॉट एवर रीजन, है ना? आपने बोला मॉरल स्टडीज बताते थे। अब ये बताना कि झूठ मत बोलो, झगड़ा मत करो, ये हो गया कि मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं करना है, पर किस तरीके से नहीं करना है वो किसने सिखाया? झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा होता तब है जब मुझे किसी बात पे गुस्सा आया, राइट? किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी ने बोला अभी ये नहीं करना है, तो मैं झगड़ने लगती हूँ। लेकिन उसमें कोई सिर्फ बोलता है ये मत करो या ये करो, इससे आसान हो जाता है वो करना या ना करना। वी डोंट नो हाउ टू डू इट, राइट? वो जो हाउ वाला पार्ट है ना, वो जब तक आप जिंदगी में उसका एप्लीकेशन नहीं करते या उससे आपके जिंदगी से जोड़ नहीं सकते, तो फिर वो सिर्फ नॉलेज रह जाता है। कुकिंग करना है अगर आपको, और आप कुकिंग का रेसिपी बुक ले लो, और कभी आपने लाइफ में कुकिंग नहीं किया, ऐसे आप लेट्स अज्यूम, तो सिर्फ रेसिपी जो है वो रिसीव नॉलेज है कि इसमें आधा किलो ये लगेगा, 2 चम्मच नमक लगेगा, जो भी है। लेकिन जिन्होंने कुकिंग किया है उनको ये पता चलेगा कि वो सब्जी पकी है या नहीं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस बता सकता है, वो बुक नहीं बता पाएगा। शायद उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन हो कि ये जब होगा तब वो पका है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। जब तक आप पहली डिश पकाते नहीं, आपको नहीं पता चलता कि वो धीमी आंच कितनी देर तक रखनी है, उसको हिलाना किस तरीके से है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकल इंसाइट, वो जो छोटी छोटी चीजें आप नोट करते हो कोई चीज सीखते वक्त। सिमिलरली ड्राइविंग के टाइम पे, राइट? आपको सिर्फ बताया मैंने एक्सेलरेटर से आगे जाएगी गाड़ी, ब्रेक दबाने से रुक जाएगी, इससे आप सीख जाओगे गाड़ी कैसे चलानी है, जब तक कि आप चलाओगे नहीं। तो ये जो पेडागोजिकल मॉडल है सी लर्निंग का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो एक्सपीरियंशियल है। तो आकांक्षा फाउंडेशन में जब हमने शुरुआत की, तो एक्चुअली हमने पैंडेमिक जब हिट हुआ उसके पहले ही हमारा वर्कशॉप हुआ था टीचर्स के साथ, नॉट टीचर्स बट कुछ लोगों ने हमने किया था। सो हमको ये रियलाइज हुआ पैंडेमिक जब हिट हुआ कि अभी सबको टीचर्स को ऐसा नहीं, सबको किस चीज की जरूरत है? बहुत डर गए थे सब लोग, करना क्या है, कैसे लाइफ आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए उनको कोई ऐसे टूल्स की जरूरत है जिससे वो खुद को रेगुलेट कर सके, काम डाउन कर सके। जो भी हो रहा है उस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ उस पे हमारा कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सी लर्निंग में हमने शुरुआत की टीचर्स के साथ, कि हमने सबसे पहले हमारे जो एजुकेटर्स थे उनके साथ सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक एक करके इंट्रोड्यूस किए। हमने करिकुलम इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, और ये मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ।
ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने यही तरीका अपनाना है, लेकिन हमारे लिए ये तरीके बहुत फायदेमंद रहे। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हर दिन सुबह में स्कूल चालू होने से पहले, तभी तो ऑनलाइन स्कूल हुआ करता था, लेकिन अभी भी जैसे स्कूल चालू होता है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको इससे भी ज्यादा है, लेकिन ये कुछ की स्ट्रैटेजीज थी हमारी जो रेजिलियंसी प्रैक्टिसेस हैं, वो हमने हर दिन एक एक करके बताई भी, मतलब नॉलेज भी दिया और वो करवाई भी। तो जैसे उनको एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, जब मैं कंपैशन का प्रैक्टिस करती हूँ, जब मैं रिकग्नाइज करती हूँ कि कोई काइंड एक्ट था जो मेरे आसपास किसी ने किया, तो मुझे कैसे फील हो रहा है, या फिर अगर मैं रिसोर्सिंग और ग्राउंडिंग जैसे प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, तो मैं आई एम एबल टू रेगुलेट एंड स्टेबलाइज माई सेल्फ। तो सबसे पहले सिर्फ प्रैक्टिसेस से शुरुआत की हमने, और इसको ऐसा नहीं कि एक हफ्ते सिखा दिया फिर चले गए अपने अपने स्कूल। ये एक तो ऑनलाइन था तो स्कूल जाने की बात ही नहीं थी, लेकिन ये कंटिन्यूअसली चलता रहा काफी महीनों तक कि आप सिर्फ प्रैक्टिसेस करो। जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो फिर आपको खुद में ही शिफ्ट्स दिखने लगते हैं। और वो बोलते हैं ना कि हम वो टेली एड्स भी देखते हैं कि पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, फिर मुझे मिला। तो हम किसी का सुनते हैं तो हमको लगता है इसका फायदा होगा, शायद कुछ तो किसी के लिए होगा। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो खुद ही एडवोकेट्स बन गए कि ये ना कुछ अलग है, इससे मुझे फायदा हो रहा है। और फिर उनको लगा, हम नहीं पूछा आपको लगता है कि ये बच्चों को उसका फायदा होगा, तो बोले फायदा तो होगा, लेकिन कैसे लेना है पता नहीं। फिर क्या हो गया, उनको लगा कि इसका फायदा है, ये दवाई अच्छी है, मतलब ये दवाई नहीं है, बट इसको बच्चों के साथ कैसे लें। और तब उनका जो क्वेश्चन है खुद होके आया था, तो फिर हमने उसके लिए भी सोचा कि कैसे आगे करना है। बच्चों के लिए आप यहाँ पे जो बैठे हैं, काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप देखोगे तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से भी कनेक्टेड है। मैं ये नहीं बोलूंगी सारे वहाँ वहीं से आए हैं, लेकिन इंटरडिपेंडेंस हो, कंपैशन हो, कंपैशन तो खैर सारे जगह पे बात की जाती है उसकी, लेकिन कुछ की कंसेप्ट्स ऑलरेडी हमको पता है, हम अपने ही डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो हम करते हैं ना, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि सिंप्लिसिटी इज द की, राइट? सो इफ यू सी फॉर लाइक ओशो जी ने जैसे बोला है कि माय मेडिटेशन इज सिंपल, इट डजंट रिक्वायर एनी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस, इट इज सिंगिंग, डांसिंग, सिटिंग साइलेंटली। तो क्या बच्चों को हमेशा ऐसे ही बिठाना है और करवाना है सी लर्निंग? जरूरी नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने हर दिन एक थीम रखा बच्चों के लिए, जो हफ्ते दर हफ्ते चालू था। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल तो नहीं, यहाँ पे है ही सारा, माइंडफुल मंडे, जिस दिन हम माइंडफुलनेस के ऊपर, चाहे आज हम चल कैसे रहे हैं उस पे ध्यान देंगे, हम पानी कैसे पी रहे हैं उस पे ध्यान देंगे, या फिर हम खाते हुए उस खाने पे ध्यान देंगे। सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हम मंडे को करते हैं फॉर एग्जाम्पल। काइंड ट्यूसडेज, तो ट्यूसडे को या तो आप काइंडनेस रिकग्नाइज कर रहे हो, या काइंडनेस आप यू नो यू आर एक्सटेंडिंग इट टू समवन। वेलनेस वेडनेसडे, सो इसमें हम रेजिलियंसी प्रैक्टिसेस काफी हद तक ऐड करते थे। थैंकफुल थर्सडेज, सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है, अगर आप देखेंगे कि कोई भी चीज हमको ऐसा नहीं, अभी आपको मैं बोलूं कि व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर, तो आपको 2 मिनट सोचने के लिए लगेंगे, लेकिन ये आप रोज करोगे तो जब आप उस सिचुएशन में रहेंगे तभी आपको ध्यान में आएगा कि यू नो आई एम सो थैंकफुल, एंड इमीडिएटली यू विल थैंक दैट पर्सन, immediately that feeling will come to your heart. So ये जो practices हैं, फ्रेंडली फ्राइडे, अभी फ्रेंडली फ्राइडे हमने क्यों रखा था? एक तो ये पैंडेमिक के टाइम पे बच्चे एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे, तो जो कनेक्शन बिल्ड होता है, अपने अपने घरों में रह के आप कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते, तो फ्राइडे को हम ऐसे टास्क देते थे कि अपने फ्रेंड को कॉल करना है, उनसे बातें करनी है, और फ्रेंड ऐसे नहीं, क्लास में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड करने का प्रोसेस है, जो अगर आप सी में देखो, सोशियो इमोशनल एथिकल लर्निंग, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, राइट? सोशल में हम सब यहाँ पे अलग अलग
प्रकार के होंगे, किसी को कोई अचानक से आ जाए तो क्या बात करना है समझ में नहीं आता। कोई लोग बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बात करना होता है। कुछ लोगों को समझ में आता है कि सामने वाले को फील कैसे हो रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। हम सब अलग हैं, लेकिन ये चीजें सीखी भी जा सकती है। सो बच्चों को भी ना इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वेज में हम वो कर सकते हैं। उसको सी लर्निंग ने एज अ करिकुलम भी किया है, लेकिन हम लोग एज एजुकेटर्स जब यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आप उनको एनकरेज कर सकते हो ऐसी छोटी छोटी चीजें करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस क्यों चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से करेंगे तो चलेगा ना, क्लास के अंदर इतने सारे बच्चों के साथ क्यों करना है। तो जब आप साथ में करते हो तो आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे सिखाता है, आपके एक्सपीरियंस से भी मैं डबल सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे वो एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। सो जैसे हम डाइवर्सिटी अप्रिशिएट करते हैं, अगर मुझे लगता है कि नहीं सबको ये पसंद, मैथ्स पसंद होना ही चाहिए, लेकिन मेरे क्लास में 4 बच्चे हैं जिनको नहीं है पसंद, that is fine, right? So how we are all different but also similar, and yet we respect each other. We don't feel alone in this journey. ये जब हम सेल्फ की जर्नी करते हैं या इवन कनेक्टिंग विद अदर्स की जर्नी करते हैं तो हमको डर लगता है। तो जब साथ में कर रहे हैं तो वो डर निकल जाता है, क्योंकि वी आर सपोर्टिंग ईच अदर वेरी वेल, संघा जिसको बोलते हैं, राइट। ऑल्सो इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी। सी लर्निंग में अगर आप करिकुलम लेके भी जाओ, और एग्जाम्पल देती हूँ, चैप्टर 1 जो है वो काइंडनेस और कंपैशन के ऊपर है, और समझ लीजिए कि 2-3 महीने आपको वो चैप्टर लेने के लिए निकल गए। इसका मतलब ये है कि जब वो सेकंड चैप्टर के पास आप जाओगे तो कंपैशन भूल गए। It makes no sense. It's not like today we are learning about plants, tomorrow we'll learn about animals, today we are learning about decimals, tomorrow हम पीछे का भी याद रखते हैं, राइट? पर ये याद रखने वाली चीज ही नहीं है, यहाँ पे हमको एक्सपीरियंशियल मोड में लेके जाना है। तो इफ यू डू नॉट कंटिन्यू डूइंग इट, इट विल मेक नो सेंस कि सिर्फ आपने एक बार सीख लिया और फिर मतलब फिर आप ना ही करे तो अच्छा है, ऑनेस्टली, लाइक यू नो, जस्ट नॉलेज इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल विदाउट द प्रैक्टिस। वी लर्न डीपली थ्रू द क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स। किसी किसी को क्वेश्चंस आते हैं कि हमने एक एक्टिविटी किया था स्कूल में, स्टेप इन स्टेप आउट, की किसको ये पसंद है अंदर आ जाए, किसको वो पसंद है अंदर आ जाए, ताकि बच्चों को पता चले कि सबका सब डिफरेंट है, राइट? अगर मैं यहाँ पे पूछूं और आप हाथ ऊपर कर सकते हो, किस किस को आइसक्रीम पसंद है? कुछ ही लोगों ने हाथ ऊपर किया है, राइट? किस किस को सोना पसंद है? और वहां पे कुछ लोगों ने किया, सबने हाथ ऊपर नहीं किया। किस किस को खुश रहना पसंद है? ऑलमोस्ट सबने किया। मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चों में से 2 बच्चे बाहर खड़े रहे, वो बोले हमको पता ही नहीं हैप्पीनेस मतलब होता क्या है। ये जब क्वेश्चन आता है बच्चे से, तब पता चलता है उनके अंदर क्या चल रहा है। और मेकिंग द विजिबल इनविजिबल विजिबल, जैसे उन्होंने भी बोला कि व्हाट इज देयर इन द चाइल्ड्स लाइफ, वी हैव नो आइडिया। अभी यहाँ पे इतने लोग बैठे, आपके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। आप या तो खुश हो, या नींद आ रही है, या कब खत्म हो, जो भी, whatever your thoughts are, we never know the child's world. But when we give them a space to talk about themselves and not about a third party, क्योंकि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं काफी हद तक वो थर्ड पार्टी बन जाते हैं कि समुंदर कहाँ है और नदियाँ कहाँ है, और ये 4 और 4 8 बनता है, ये मेरे बारे में नहीं है। हाँ, ये मुझे हेल्प करेगा, when I go out in the world it will help me, of course, but it's not about me. I think that's what C learning brings in very, very strongly. And like I said, कि आप एक्सपीरियंस करके आपको उसका फायदा होता है तो आप अपने आसपास के लोगों को बताने ही वाले हो। So when teachers actually see the value, it percolates to children. So मैं ये ही बोलना चाहती हूँ कि how would you like to build this community of practice in your spaces? जो schools हैं उसमें सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं है, ये पहले हमारे लिए है, जो पूजा जी ने बहुत सुंदर तरीके से भी बताया है।
और अब मैं थोड़ा-सा चुप हो जाऊँगी, बहुत बात कर ली। आप को एक वीडियो दिखाएँगे हम, जो आकांक्षा फाउंडेशन के कुछ एक है जो स्कूल लीडर हम बुलाते हैं, प्रिंसिपल को हम वहाँ स्कूल लीडर बोलते हैं। एक टीचर हैं और कुछ बच्चे हैं जो अपना अनुभव सुनाएँगे। तो आप वो देखिए। Learning is not just a curriculum program. It's imbibed deeply in our school culture. In fact, we also have growth mindset as a school goal, and all the seed practices beautifully complemented. I strongly believe that seed cannot be limited to the four walls of a classroom. So, the minute the student enters into the school premises, I want them to feel that aura around it. I want them to transition into it beautifully. So that is why the school day of every student is designed in such a way that they get to practice it in multiple spaces. Apart from a few dedicated spaces like circle time, SEL slots, we also practice learnings in slots like parent meetings, staff meetings, lunch breaks, during transitions, subjects, art, PE. In all these spaces, we get to practice it. We call it Vishram. So hi, this is Nishiganda Kashikar, a teacher at Akanksha Foundation and a certified Diamond facilitator. So before taking C to my children, I really myself as a human benefited from it. My perspective about happiness, compassion, kindness, everything changed, and I realized how important it is for me to take care of my well-being. And as eventually I took it to my class, I even gave the opportunity to my children to experience what kindness, compassion look like, and how their small action can be the first step in making this earth the better place to live. I also integrated C with my subject, for example, geography, human climate change, and global warming. I made the children realize what interdependence is, how our system works, how my actions are going to cause this, how my actions can stop this. And then through this, I thought making the children realize that one mindset, even one action, one changed mindset can be a huge benefit for sustaining humanity. सी लर्निंग में मुझे सी लर्निंग ने मुझे हेल्प किया है अपने और दूसरों की इमोशंस और फीलिंग को जानने की। सी लर्निंग में हम belonging, resourcing, kindness, compassion की जानकारी स्कूल के बच्चों को देते हैं। As a guru, हम लोग क्लास में हर रोज ग्राउंडिंग और रिसोर्स की प्रैक्टिस करते हैं और तो हम लोग क्लासेस में zone of resilience की चर्चा लगाते हैं। Thank you. Bye. See, learning are not going to give you results immediately. It's going to take time. It's a very long process. It requires a lot of consistency, reinforcement of learning, continuous practice, and this is with a lot of patience. But once you can see the change in the children, children are going to take back to their community, to their friends, to their families. Teachers are going to play a very important role because they can model out how compassion, kindness looks like and get children towards this progressive change, not only in education, but also making them aware that this is now the necessity and not the luxury anymore. Compassion and kindness is the need of time.
So that's it from my end. Uh, अभी के लिए तो इतना है. आपके पास कोई सवाल होंगे तो बाद में आप पूछ सकते हैं. Thank you. Thank you, Ms. Deera Peer, for making us do a fun come a learning game. You truly highlighted the part which says that we often tend to forget that we should practice what we preach, and the most human thing that it's very important to understand each other's differences but should respect every individual. Thank you. Next, I would like to call Shri Thupten Kaldan, representative of Joka. I would like to hand him the mic and take the session. Thank you. Hello, Julie to everyone. I am Tupten Kaldin and representing Arunachal Pradesh Department of DOKA. DOKA is a department in Arunachal Pradesh which stands for Department of Karmic and Adhyatmic, basically looking after the Chasrik Lekhung, Chastangrik. So that is the department that I represent as a director. And today we have come as a team from Arunachal Pradesh comprising of around 10 to 12 people, uh, basically of the team comprising of teachers. And we have our state deputy director, Madam Gemma Ringu, who is looking after the state education and research and training. And we have in our team, we have teachers, we have some NGOs who have come here to attend the Sea Learning Conclave, Sea Learning Conclave India here in Ladakh. And first of all, I would like to thank you so much for your grand hospitality that you have shown to us. And we thank to our friend Tashin Namgila and Losong Mola. So for the sea learning, I have nothing much to present because our speakers before us, they have explained in detail. They have explained in the technicalities, the nitty-gritties of the sea learning. And sea learning in our state, Arunachal Pradesh, since last year in October, we have started to kind of launching the sea learning in our state. We have requested the director of Tibetan libraries, works and archive, Dharamsala, Geshe Lagdorla. Along with him, we have invited Sri Kailashji, who is the Hindi translator of His Holiness the Dalai Lama. And then we were very happy to invite Lafsang Mullah and other your Ladakh NGOs. They have extended their all help to introduce the sea learning in Arunachal Pradesh as the first program, which is called the Taste of Sea Learning launch. So for that, we are very grateful. And in our state, though sea learning is, as you all know, that I will not go, as I said, in the nitty-gritty and details of sea learning, but we all know that sea learning is one of the very important the vision of His Holiness Dalai Lama that we all know. His Holiness Dalai Lama, that he has advisors, he's our root guru, we follow him, he's our teacher from Arunachal to Ladakh. We always say that is there, but out of his so many teachers and advisors, this sea learning is one of his very, very important vision that His Holiness has given to this entire world, irrespective of the believers in different traditions and also non-believers. So for that, we the people of the Himalayan region extending from Ladakh to Tawang, Arunachal Pradesh, we have a special responsibilities to carry forward His Holiness' vision, and we enthusiastically do that.
For that, our Chief Minister Sri Pema Khandula and my director, my department's chairman Sri Chambe Wangdula, they have instantly approved our proposal to attend this sea learning conclave here in Ladakh. So that shows that in our state also we are very enthusiastic, definitely that we would like to do the sea learning in our state. Now, looking at the Ladakh, we always take, Ladakh as our kind of a, friend state, and we take advice from Ladakh. We seek cooperation from Ladakh. We are very friendly. I mean, we exchange so many things at different levels. So when Ladakh does something, then we always cooperate. We always try to learn, and we are always there. When we do something, we're always ready to share with Ladakh. That is the kind of relation that we have all along the Himalayan belt. Now, having said that, last year we have started the sea learning program in Arunachal Pradesh in the month of October. The government, as I said, the DOCA department, which is Shurik department, has initiated this, and we have one private school called Jamse Gateling, whose director Gen Lofsang Singh, Lofsang Dorjila. He's also here attending some program at Lamton, and he was also attending sea learning program this time in Ladakh. He's also there. Besides that, we have one the university in Dahung, whose director is from your Ladakh, Dr. Gurmit Dorjila. He's also here. He's also the Dahung University is also very interestingly, very enthusiastically looking forward to this thing to push forward the sea learning curriculum activities. That is the position that we have today. And then besides that, we now have so many distinct problems that we face in launching C curriculum activities. That's why the whole team this time we have come to discuss the kind of things that in other states how they are taking the sea learning program forward. And it's very happy to see this time around we have friends from Rajasthan, we have some NGOs from Maharashtra, Pune, and Nagpur, Akanksha Foundation, and then we have the Shamdalaya Foundation. So enthusiastically and so advancedly, they have already started taking forward the sea learning program, which is so encouraging to us. So definitely, we, the people of Himalayan region, will also take the sea learning very seriously, very enthusiastically forward. We will definitely do that. And with these few words that I would like to conclude my speech. Thank you so much. Thank you, Shri Tuptan Kaldin. You definitely bowed a different aura on this stage when you came in all together. We are grateful for your presence today. Next, now we would request questions from the audience. Thank you very much for this opportunity. I'm from SCRT Arunachal Pradesh. May I ask some questions to Akansha Foundation, who is collaborating with, I believe, Maharashtra government. So can I ask Ms. Uh, uh, Dheera madam, uh, my question to you, because I found your whole presentation is very practical, and I've not found anywhere any vague thing, in the sense which it's very much practical to implement. So can I ask you one thing? Why have you have chosen only 26 schools in Maharashtra, although you have covered large area, for example, Pune, Maharashtra, and Nagpur? Question number one is this. Question number two is, you have do you have shared the curriculum, or you have focused on practices only? So question number two is this. Question number three is, did you have collaboration with, because as a
Pooja has rightly pointed out, because NEP has four areas. Number one is school education. Number two is school education in ECC, teacher education, and adult education. So, do you have any collaboration with teacher education wing, which is again a separate cadre as per government of India, and we have separate cadre in Arunachal Pradesh. So, do you have any collaboration when you are talking about working with diets and SCRTs? So, this is my third question. And the fourth question is uh, contextualization. Of course, this is very important. So, which type of contextualization in local context you have done? For example, Maharashtra, it's again very vibrant, and it's the social dynamics is very different, and the target group whom we are catering is very different. It's usually lower middle class or lower income group, or sometimes we have to go through a children who comes from domestic violence. As yesterday also, I have asked the same question to Pooja also, because the first session was know yourself, and you need to ask five. In total, we asked 15 questions. Yeah, because when we talk about emotional well-being, and we understand the children who are coming to us are from a background where he or she may not getting emotional support, and as a teacher we work as a parents in absentia in the school, because we need to cater his or her emotional needs. We cannot always refer to therapists, because therapist means lot of logistic things again. So how you address that area? I have my own answers. I have figured out last night after having discussions. I have figured out my answers also, but I need to have more clarifications. These are my questions. If you can clarify full. Yeah. Okay. Uh, okay, I'm assuming the first two questions are for me, so I'll get started and then maybe Pooja can take over. The 26 schools that we were talking about, basically these are English medium schools, and it's a public-private partnership. So, considering all the formalities that it requires and the strengths that the organization has to take on more, so we do keep expanding. But we have taken a conscious decision to first, bring in more quality to the current schools and then expand it. The other reason why we have not taken up more schools is that one of our objectives is to actually demonstrate or model how a school can be run, so that those schools can be run on their own. Because if everything Akanksha would take up, then it wouldn't be an example or an inspiration, but it would just become an organization running the schools. So that is the reason it is 26. We have 10 in Mumbai, 10 in Pune, and 6 in Nagpur. So that's how it is spread out. In terms of do we have the curriculum rollout or just the practices, we have both. So we have dedicated sections, or let's say I will call it classes. So in the timetable of the children, there is a section for SEL or C learning, because at Akanksha, even before C learning, we would do SEL skill building. So dedicated slots भी हैं. और हम practices जो करते हैं, I think the audio wasn't very clear, but the school leader that was talking in the video was saying that whether it's in the assembly or the beginning of a class, end of a class, lunch break, तो इस समय में हम वो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि वो सिर्फ वीक के 2 पीरियड ना बन जाए, and it becomes a way of life. It cannot be restricted. We always have this debate कि आप integrate ही करना चाहिए और अलग रखना चाहिए इसके बीच में, what would you choose? If you ask me personally, I would say both are important. क्योंकि इंटीग्रेशन तो चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस होना है, उसमें तो क्लैरिटी है, बट अलग स्लॉट इसलिए भी होना चाहिए कि चाहे मैं मैथ्स का क्लास ले रही हूँ, मैं उतना डेप्थ में आपके लाइफ में क्या चल रहा है उस पर नहीं क्वेश्चन कर सकती, लेकिन कोई स्पेस हो जिसमें वो बच्चों को पता है कि नाउ आई कैन टॉक अबाउट माई फीलिंग्स, माई लाइफ, माई फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो डेडिकेटेड स्पेस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वो रखने में सस्टेनेबिलिटी नहीं है. सो प्रैक्टिसेस विल सस्टेन इट.
तो एससीईआरटी के क्वेश्चन के लिए मैम अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में कई सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना था और अगर हम अपना सार्थक डॉक्यूमेंट देखें जो एनईपी का है देर आर थिंग्स जहां पर हम पिक कर सकते हैं कि पीएबी में सार्थक को फुलफिल करने के लिए कौन से एक्शनेबल हैं जो करिकुलम हमें देता है, क्योंकि अगर स्टेट अपना अलग से करिकुलम बनाता है तो सोचने में, बनाने में और लॉन्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर एक फ्रेमवर्क है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में इनोवेशन हेड में अगर हमें लगता है कि वो चीज फुलफिल हो रही है तो सी लर्निंग के फ्रेमवर्क को उठा के स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट जनरली एमओरी के करिकुलम को एज इट इज अपनाना नहीं चाहेगा, तो फ्रेमवर्क को उठा के व्हाट वी कुड डू, तो हम लोगों ने नाम बदला उसका करिकुलम का। वी आर राइटिंग विद द जो डीसी हमारा बनता है, डेवलपमेंट कमिटी स्टेट रिसोर्स ग्रुप, उसका एक वर्कशॉप हो गया है। सो दे हैव कॉन्टेक्चुअलाइज, हैंडबुक बन गया है, उसका पायलट स्टडी होगा और फिर स्टेट उसको एज अ बुक लॉन्च करेगा, जस्ट हाउ दिल्ली गवर्नमेंट हैज डन हैप्पीनेस करिकुलम। पर पूरा काम शुरू से करने का जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू पिक द फ्रेमवर्क और उसके साथ अगर हम थोड़ा तोड़ मड़ोड़ लें और नाम बदल दें तो आई थिंक वी विल बी एबल टू क्रिएट द हैंडबुक फॉर द स्टेट। तो दैट्स वन थिंग। और टीचर एजुकेशन में जो आपने बात की है, तो टीचर एजुकेशन में अभी कोई पेपर नहीं है खास करके प्री सर्विस में रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलबींग। और जब चाइल्ड साइकोलॉजी पे है, चाइल्ड काउंसलिंग पे है, पर हेल्थ एंड वेलबींग और पर्सनल वेलबींग पे कुछ ज्यादा नहीं है। तो वी कुड इंक्लूड अ प्री सर्विस जो वहां पर है, और इन सर्विस पे तो ट्रेनिंग्स होती रहती है तो उसमें तो कोई बात नहीं है। तो आई थिंक दैट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेट जो हम स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन में ले सकते हैं। आई थिंक वी हैव दैट रैशनल ऑल्सो, नीड ऑल्सो, कि अगर केयर गिवर्स को ही केयर नहीं मिलेगा तो इम्पॉसिबल है उसको कर पाना। तो दैट्स अनदर थिंग। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग ना स्टेट को लेके। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, हाँ, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन पे मैम आई थिंक इफ यू वर्क विद द, इफ द एनजीओ पार्टनर्स विद द स्टेट रिसोर्स ग्रुप के पास इतना विजडम होता है, बिकॉज अगर आप राजस्थान देखिए, जैसलमेर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम उदयपुर इज अ ट्राइबल बेल्ट, जैसलमेर का अलग ही बेल्ट है, देयर इज अ शिखावटी बेल्ट। तो स्टेट रिसोर्स ग्रुप मिलकर अगर सोचते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, तो सेम जो कहानियां, जो कॉम्पिटेंसीज दी हुई है अपने किताब में, अपने सी लर्निंग किताब में, उसको हम अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कर सकते हैं। योर स्टेट रिसोर्स ग्रुप विल हैव दैट विजडम। हमको बस उसको सपोर्ट करके इफ वी कैन राइट अ टेक्स्ट बुक, आई थिंक दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस। जैसे अपने एससीएफ में भी आपने देखा होगा, या अभी जो करंट प्रोग्राम है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेड 6, बट लोअर ग्रेड्स के लिए कुछ नहीं है। तो इफ वी कुड डू समथिंग फॉर लोअर ग्रेड्स, क्योंकि अचानक से 6th में सिलेबस का भी प्रेशर है और सोशल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ का 2 चैप्टर है आई थिंक। सो इफ द प्रैक्टिसेस आर वेरी पावरफुल फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वो इन्फोर्स होगा। या लाइफ स्किल कोलैबोरेटिव, जो 53 लाइफ स्किल कोलैबोरेटिव जो अभी स्टेट का काम चल रहा है, बहुत इम्पॉसिबल है 53 कर पाना ग्रेड 6 से ग्रेड 12, क्योंकि टाइम ही नहीं है अपने करिकुलम में। सो इफ वी कुड डू समथिंग, जैसे हम शमताले में क्या करें, वी आर डूइंग समथिंग फॉर प्राइमरी ग्रेड्स, ताकि अर्ली ऑन बच्चों का प्रैक्टिस स्ट्रांग हो, और उसको उस करिकुलम को हम खुद की खोज बोल रहे हैं। सो 3 years we would be working with the state, and hopefully on the 4th year we will launch it for Rajasthan government. So that's the hope and aspiration. Thank you. We can justify ourselves also, and I got both of your points, because state curriculum framework, we have already done the part, and we have already uploaded in the portal which has been shared to us by NCF, and the book for class 1 and 2 is already ready, and we have already received, and 3 onward is under development right now in NCRT. This is what we are told, and we have deputed teacher writers also from our state. So this part we are doing, but again, other aspects which you told about school health and well-being, that is again another scheme. We can see how we can collaborate there. That aspect we can take care. And the good suggestion is by changing a name and some of the areas which we can erase from here, so that it becomes more applicable for us. Yeah, I got it. Thank you very much.
I just want to add to that while there might be curriculum and spaces in school कि जगह तो बना दिया सी लर्निंग के सी लर्निंग हो या जो भी आप ये करो, टीचर सपोर्ट सबसे क्रिटिकल पार्ट है क्योंकि टीचर को इंटेंट है पढ़ाने का वो, लेकिन पता नहीं कैसे करना है, तो वो वाला एस्पेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये है. हेलो, जुले मैम ने तो मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा एक क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आजकल सभी लोग जो है मार्क्स के पीछे दौड़े जा रहे हैं। जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उन्हें अच्छा स्टूडेंट मानते हैं, और जो कम मार्क्स लाते हैं उसको थोड़ा बुरा स्टूडेंट ऐसा कुछ मानते हैं। तो ऐसे में ऐसी लर्निंग क्या कौन मतलब क्या इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं? दूसरा, उसी बेसिस पर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब सब मार्क्स के पीछे दौड़े जा रहे हैं, तो टीचर भी चाहते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट में उनका सब्जेक्ट में बच्चे अच्छा मार्क्स लाए। बट उसमें क्या होता है कि सी लर्निंग जब हम सिलेबस के साथ लाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होते हैं मैम। तो आपके पास ऐसा क्या मतलब टेक्निक है जो हम क्या कहते हैं कि सिलेबस के साथ-साथ सी लर्निंग भी मतलब साथ में लें? क्योंकि हमारे जब हम डाइट में हमें ट्रेनिंग दिया गया तो काफ़ी सारे टेक्निक बताए गए थे, पर जब हम वो टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी सारे मुश्किल होते हैं। तो सारे टाइम जो है वो सी लर्निंग के ही पीछे चला जाते हैं, और उसमें हमारा सिलेबस काफ़ी सारे रह जाते हैं, और जो पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता है। बाद में पेरेंट्स सी लर्निंग में क्या सीखा ये नहीं देखते हैं, और सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाते हैं वो ये देखते हैं। तो इसमें इस संबंध में आपसे कुछ टिप्स चाहता हूँ मैम। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हम माइंडसेट का बात कर रहे हैं. अ, अगर आप डायलॉग्स कर पाए, मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग्स बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट के साथ, क्योंकि अगर एक बच्चे को हमने क्लासरूम में सी लर्निंग सिखा दिया और वो घर में जाके उसके ऑपोजिट कुछ होता है, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्लास में तो ये बातचीत हो रही है और घर पे ये बातचीत हो रही है. तो आई थिंक पेरेंट्स के साथ वो बातचीत कर पाना, सर आप बिलीव नहीं करेंगे लामा जी, व्हेन आई स्टार्टेड सी लर्निंग, एक पेरेंट्स आ गई मुझसे लड़ने के लिए और बोला कि ये आप क्या पढ़ा रहे एग्जाम के टाइम, जबकि उसको एग्जाम देना है. तो मेकिंग देम अंडरस्टैंड टेक्स टाइम, मैं कहूंगी, पर इट इज पॉसिबल. अपने पर्सनल जीवन से ये बताना चाहूंगी कि मैंने पढ़ाई की है 12th फिजिक्स बायोलॉजी विथ मैथमेटिक्स. मैंने बैचलर्स किया है मास कम्युनिकेशन और वीडियो प्रोडक्शन में, फिल्म स्टडीज में, और अभी मैं काम कर रही हूँ सोशल इमोशनल लर्निंग में, जहाँ पर मैंने पढ़ाई की डांस मूवमेंट थेरेपी की, एज अ थेरेपिस्ट मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद मैं पूरा कॉग्निटिवली बेस्ड ट्रेनिंग. तो आप देख रहे हैं कि मेरे शिक्षा से मेरे काम का कोई लेना देना नहीं है. और जब काम की बात आती है तो कुछ कौशल की जरूरत है जो पढ़ाई एकेडमिक्स में नहीं है. तो भले मैं मैथ्स में फेल हुई थी 12th में, लेकिन आज मैं अगर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हूँ समाज में, तो मेरे पेरेंट्स को अब ये समझ में आता है कि शी इज डूइंग अ गुड वर्क, बिकॉज माय फादर ही वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर, और हमारी काफी समय तक लड़ाई हुई है. तो सी लर्निंग इसमें किस तरह से मदद करता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों में शुरू से ही सेल्फ अवेयरनेस हो, सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स हो, तो करियर चॉइसेस ना बहुत इधर उधर नहीं होंगे. मैंने 12 साल वो चीज पढ़ा जिसकी मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है. कॉलेज में कुछ और पढ़ाई की जिसका मैं कोई काम में नहीं ले रही हूँ. आई वुड हैव डेडिकेटेड दोज precious time of my life to learn something that I wanted to do. और सी लर्निंग का वहां पर बहुत महत्व, आई थिंक अगर सी लर्निंग मेरे साथ पहले होता, वैल्यूज के बारे में बात होता, सेल्फ अवेयरनेस पे मेरा काम होता, मैं किस तरह से कॉमन ह्यूमैनिटी को रिकॉग्नाइज करती हूँ और क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, ये अर्ली ऑन मेरे साथ होता, तो मेरे चॉइसेस बहुत डिफरेंट होते. तो आई थिंक दैट सी लर्निंग वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है. एंड आई थिंक आप करेंगे एज अ टीचर, पर बच्चा भी शायद वो डायलॉग कर पाएगा एज अ पेरेंट, क्योंकि मेरे क्लास का बच्चा पेरेंट को ये बोल पाया कि व्हाई दैट इज नेसेसरी. एंड 4 दिन वो क्लास में नहीं आया, पर 4 दिन बाद वो आया ये समझाते हुए कि दिस इज नेसेसरी फॉर मी. तो दैट हैपेंस वेरी ग्रेजुअली, बहुत, क्योंकि माइंडसेट शिफ्ट का
काम है ना, तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है, और क्योंकि हम जानते हैं कि दिस इज नेसेसरी। आई होप आई हैव आंसर्ड। उसका कोई मेडिसिन तो मैं बता नहीं सकती, पर नॉट गिविंग अप होप। हाँ, जो आपने क्लासरूम में इंटीग्रेशन और टाइम की बात की है, तो क्षमतालय में हम कैसे करते हैं, इफ देयर 5 days है पढ़ाई के, तो हम 2 days वी डू अ फुल सी लर्निंग क्लास, लर्निंग एक्सपीरियंस, और 3 days हम क्या करते हैं कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस के प्रैक्टिसेस थे, मान लीजिए रेजिलेंसी है, उसको मैथ क्लास में भी इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मे बी स्टार्टिंग मैथ सेशन अगर हम आज पढ़ाने वाले नंबर सेंस का, तो वी स्टार्ट विथ कि अच्छा अभी कैसा लग रहा है, डू यू वांट टू गो अराउंड एंड चेक हेल्प नाउ स्ट्रैटेजीज, जो हमने सीखा था। फिर वो हेल्प नाउ स्ट्रैटेजीज करने के बाद मैथ क्लास शुरू करते हैं। तो 2 days हम फुल लेसन लेते हैं और 3 days हम इंटीग्रेशन में करते हैं, जिससे हम सिलेबस भी कंप्लीट कर पाते हैं। तो अगर आप टाइम डिवाइड करें और उसको ब्रेक डाउन करें, तो देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में कौन सी स्किल सिखाई जा सकती है। खास करके अटेंशन ट्रेनिंग का जो चैप्टर है, वो मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। माइंडफुल वॉक से शुरू किया, माइंडफुल ईटिंग से शुरू किया, नो नीड टू टेक अ फुल, पर जहाँ पे माइंड जार की बात हो रही है, एक्सप्लोरिंग द माइंड थ्रू माइंड जार, वहां पर आप शायद एक फुल सेशन ले सकते हैं। सो वैसे करके अगर आप करिकुलम में अपना टाइम टेबल डिवाइड करेंगे, इट इज मैनेजेबल, क्योंकि इसके बिना जो पढ़ रहे हैं वो तो रेलेवेंट नहीं है, ये तो हमें समझ में आता है। तो दैट्स हाउ वी डू इट। थैंक यू। हाँ, मे बी। हेलो, मैं टीचर हूँ, एचएम हूँ, हाय अनु योकमा की टीचर हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी हम सी लर्निंग के बारे में बोल रहे हैं, हर जगह सी लर्निंग, सी लर्निंग, स्कूल में भी सी लर्निंग चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि सी लर्निंग जो है, माइंडसेट को चेंज करना है, राइट? तो पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे? क्योंकि जबकि पेरेंट्स के पास ही बच्चे भी रहते हैं, तो उनके माइंडसेट को चेंज क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि ये जो आप सी लर्निंग की बात कर रहे हैं वो इफेक्टिव रहे, और साथ साथ में हर एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि हर डिपार्टमेंट के लिए ये सी लर्निंग क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ये मेरा सवाल है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें। नहीं नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ करना ज़रूरी है, और हम आकांक्षा फाउंडेशन में भी हमारा पेरेंट्स के साथ अदरवाइज भी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। तो हम क्या करते हैं, हमारा हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होता है, तो उस पेरेंट्स मीटिंग के 15 मिनट हम सी का प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद उनको ही पूछते हैं कि आपको कैसा लगा ये करके। जब इनके क्वेश्चन में भी था कि पेरेंट्स बोलते हैं आप इस पे क्यों फोकस कर रहे हो, और माइंडसेट की बात आती है, तो हमको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि आपका बच्चा बड़ा होके सिर्फ करियर वाइज कुछ करे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या एक सक्सेसफुली हैप्पी इंडिविजुअल रहे। तो उसके कॉम्बिनेशन, मतलब ऑब्वियसली एनी पेरेंट विल वांट टू चूज अ हैप्पी चाइल्ड ग्रोइंग इनटू अ हैप्पी एडल्ट। तो एक तो वो हो गया, और उनके साथ जब आप ये करते हैं प्रैक्टिस, तो उनके एक्सपीरियंस से वो भी ये हो जाते हैं। तो हम पहले एसएमसी मेंबर्स को ट्रेन करते हैं। यहाँ पे एसएमसी को क्या बुलाते होंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, उसमें कुछ पेरेंट्स होते हैं जो लीडर्स होते हैं, राइट? मतलब सारे बाकी पेरेंट्स से वो कनेक्ट करते हैं। तो उनको हम पहले ट्रेन करते हैं, और वो खुद भी अपने कम्युनिटी में वो सर्कल्स लेते हैं, जो प्रैक्टिस हैं वो, प्लस जो पेरेंट मीटिंग्स होता है वहां पे होता है। इसको टाइम लगेगा, ये तो सबसे बड़ी बात है। जो वीडियो मैंने चलाया था उसमें वो टीचर जो बात कर रही थी, वो एंड में वही बोल रही हैं कि तुरंत शिफ्ट नहीं दिखने वाला है, पर जब दिखने लगता है तब वो बहुत, उसका मतलब जो रिपल इफेक्ट बोलते हैं ना, सब जिसको जिसको पता चलता है वो दूसरे को बताता जाता है, तो उस हिसाब से उसका फायदा होता जाता है। लेकिन हमको ही वो कनेक्शन पेरेंट्स के साथ बनाना जरूरी है। थैंक यू। We'll take one last question. Anybody?
if there's no question, I'll just add a little bit on the previous two questions. जो हमारा गिशिला ने and then वो अपना मैडम ने जो question put up किया, that is very relevant question today. But sea learning, as we know, it is the shifting of your habit. That is one thing. And then the modern education that we have today, जो अपने पास जो आज आधुनिक जो शिक्षा हमारे पास जो है, वो आया है वेस्टर्न से. वो शिक्षा जो है, आप उसको शिक्षा को प्राप्त करेगा तो आपका ये आपका पोजीशन गेन करने का, आपको नौकरी मिलने का, अपना धन दौलत कमाने का, अपना इंटेलिजेंस बढ़ाने का, उस क्षेत्र में मॉडर्न एजुकेशन इज वेरी गुड. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आप मॉडर्न एजुकेशन लोगे तो आप कभी भूखा नहीं मरेगा, आपका नाम रहे, आपका नाम ऊंचा होगा, आप हाई पोस्ट में जाएगा. दिस देयर इज नो डाउट. बट अगर वो सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ही लेके, अगर आप मॉडर्न एजुकेशन पे ही ध्यान दे के, या आपने वो जो मार्क का कह रहा है कि मेरे को टॉपर बनना है, मेरे को डिस्टिंक्शन लाना है, इफ यू हैव दिस एज योर मेन एम, कल को क्या गारंटी है कि वो ब्रेन इतना शार्प होके ही कैन बी ए वेरी डिस्ट्रक्टिव पर्सन. आपका स्टूडेंट जो है उसका ब्रेन यूज करके ही विल बी मेकिंग एटम बॉम्ब, जो कि दुनिया को खत्म करने का चीज है, जो कि ऑल सेंशियंट बीइंग को खत्म कर सकते हैं. बट अगर उसके साथ वो इंटेलिजेंस के साथ, इफ अगर आपका सी 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 लर्निंग का जो क्वालिटीज है, जो छेलुल माध्यम पे संजय, हम लोग जो बॉडी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, छेलुल माध्यम पे संजय, संजय मतलब गुड कंडक्ट या गुड बिहेवियर, ये अगर आपका मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिक्स नहीं होगा तो वो पर्सन जो है, गारंटी नहीं होता है कि वो किस प्रकार का प्रोडक्ट फाइनली बन जाए. अगर उस मॉडर्न एजुकेशन के साथ अगर आपका गुड बिहेवियर, संचय जो आएगा, और गुड थॉट्स जो आएगा, दूसरों के लिए कंसर्न आएगा, जो ओल्ड अपना भारत का पुराना ट्रेडिशन, करुणा और मैत्री, जम दानिंगजी, ये दो क्वालिटी अगर लेके आएगा, वो अगर वो उसका ज्ञान जो उसने मॉडर्न एजुकेशन से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसका दिमाग तेज हुआ है, तो वो लड़का जो है, वो लड़की जो है, वो एटम बम कभी नहीं बनाएगा. एटम बम के जवाब में वो मेडिसिन बनाएगा, आपके लिए दवा बनाएगा, आपके लिए बिजली लाएगा, वो आपके लिए इरिगेशन सिस्टम लाएगा. तो ये ओवरऑल बेनिफिट को देखते हुए आप सिर्फ ये मार्कशीट, ये डिस्टिंक्शन पे ध्यान दोगे, या ओवरऑल आपका बच्चों को डेवलपमेंट के लिए ध्यान दोगे, ये हमको समझना बहुत जरूरी है. ये सी लर्निंग जो है, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, सी लर्निंग एक्चुअली सी लर्निंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, बूढ़ा बूढ़ी, माता पिता, सब बेटा बेटी, सब सी लर्निंग सीखना है असली में. सी लर्निंग अभी स्कूल में हम लोग जस्ट सोच रहे हैं कि ये करिकुलम स्कूल में कर रहे, तो जस्ट स्टार्ट है. सी लर्निंग जो है हमारा फैमिली में होना है. भाई बहन के बीच में सी लर्निंग का डिस्कशन होना चाहिए, माता पिताजी के बीच में सी लर्निंग का डिस्कशन होना चाहिए, माँ बेटा के बीच में सी लर्निंग का डिस्कशन होना चाहिए, पिताजी बेटी के साथ सी लर्निंग का डिस्कशन होना चाहिए. तभी हम सी लर्निंग जो होलीनेस का जो विजन है, जो होलीनेस जो चाहता है, उसको हम आगे ले जा पाएंगे. थैंक यू. Thank you for this beautiful conversation. That was some insightful information that will help us for an effective roadmap for sea learning in Ladakh and beyond. Thank you. After all the serious discussion, let us take a breath and enjoy this dance number by students of third standard from Islamia Public School.
तो नैन सितारे है चांद समुद्र क्या कहना उसका आफरी दावत में जैसे ओ शाही टुकड़ा उसके जैसी ना कोई नाज़नीं शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है Yeah. ऐसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई महफिल है ऐसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती सारी महफिल की वो जान बनी है क्या कहना उसका आफरी मुफलिस के दिल का अरमान बनी है उसके जैसी ना कोई नाज़नीं शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शादी जोड़ा सारी Thank you so much for your wonderful performance. Great dancers are not great because of their techniques, they are great because of their passion, as we saw in these students of IPS. Thank you, girls. You all were beautiful. A healthy mind resides in a healthy body, and after all the nourishment to our mind, it is the time to nourish our body. We will now break for lunch. We'll rejoin at 2:50 sharp. Please do not leave us as we have more insightful sessions lined up after lunch. Thank you.
Hello, hello. Hello, everyone. Attention, attention, please. Till everyone comes, the students of Skara Yogma are going to perform a song. So please welcome them. Thank you. Fitilza, sulung poni, aloi poni cho, wasang Fidila, Fidilza, sulung poni, aloi poni cho, wasang Padu, Kailang, Nicho, Ilan Nicho, Dori Chang, Shutian Himala, Padu, Kailang, Nicho, Dori Chang, Yaya, Yaya, Sulung Poni, Alan Poni, Wasang Yarila,
Because then fingerprint है